Hi guys, today in this video we will have discussions on basically the topics which we have left yesterday, right? So in this video we will have discussions on. So in this video we will have discussions. Write a short essay on Rana Pratap's patriotism was his only offense. Write a short essay on Rana Pratap's patriotism was his only offense. So basically, why this statement has been time and again reiterated by the B.S. Smith, Dr. B.S. Smith, that Maharaja Pratap patriotism was his only offense. Maharana Pratap, the ruler of Mewar, had a characteristics of patriotism, courage, valor, and self-respect, and strong love for independence. His whole life was filled with turbulence, sufferings, and challenges. So you know that Maharana Pratap, that the struggle with Akbar, right? So time and again, this great personality of Rana Pratap's uh, surface in media as well. So his whole life was filled with turbulence, sufferings, and challenges which he fondly endured for honor of his homeland. Even under the most difficult situations, he was never prepared to compromise with the high value. So he was having high value. Why? Because he had resisted the Mughal Sultanate, right? So Akbar had won over most of the Rajput chieftains by his astute policy and could not endure the independent attitude assumed by the Rana, who must be broken if he would not bend like his fellows. So, like there are many Rajput, chieftains and Rajput states have surrendered before Akbar, but the Rana Pratap, whose sacrifices and valor is exhibited before us. So even Rana's younger brother Sakti Singh also deserted, you know, him and became a vassal of Akbar. So the Rana's younger brother Sakti Singh was, you know, brother Sakti Singh also deserted. Rana youngest brother Sakti Singh also deserted him and became vassals of Akbar. But Rana Pratap had vowed never to the barters away centuries old freedom of his homeland at any price whatsoever. So Rana's younger brother Sakti Singh had also rejected him, but Rana had vowed never to barter away centuries old freedom of his homeland at any price whatsoever. So he was committed to his homeland. So whatever the situation it may be, but I will not bow before Akbar. So he was having that kind of courage. So single-handedly, so but biggest statement that Maharana Pratap patriotism was his only offense. So we are trying to figure out why this statement was for the Maharana Pratap. So basically, because all the younger brothers and all the colleagues of Maharana Pratap, for example, everything have already rejected him. But Maharana Pratap single-handedly for a quarter of centuries, you know, withstood the combined efforts of the empire. So at one time carrying destruction into the plane, at another flying from rock to rock and feeding his family. So he did not have the military power of Mughal, but his resistance continued with the offense of his patriotism for his motherland. So because what he did that the he uh, he he basically stood the combined efforts of the empire and at one time carrying this destruction into the plane at another plane. But he was having the you can say combined strategies of dealing with the Akbars or dealing with the Mughal Sultanate. So at one time he was making destruction into the plane. At another time he was flying from rock to rock and feeding his family. So he was doing both the things, right? So he did not leave military power of Mughal, but his resistance continued with the offense of his patriotism for his motherland. So resistance against Akbar or Mughal Sultanate continued with the offense of his patriotism for his motherland. Though Chittor was sacked and plundered by Akbar's forces, the spirit of Rana Pratap was unbroken. He still refused to acknowledge Akbar as a Mughal emperor and vowed never to appear in his court in Delhi. So he because time and again Akbar had sent Amal Singh and many others go and persuade Rana Pratap, but Rana Pratap did not he was not persuaded by Man Singh and all colleagues of Akbar or associate of Akbar. So that's what.
Maharana Pratap patriotism was his only offense, and he suffered valiantly for upholding the righteous principles of sovereignty and independence. So that's the reason, that because since he upholds the principle of sovereignty and independence and righteous principles, the not to go before anything. So that's why he is only. That's why B.S. Smith said that if Maharana Pratap could have he could have gone then he could not have such kind of days. So. Because all the colleagues of Maharana Pratap's already bore before Akbar, so and they had very good times. So that because they were enjoying the powers and perks given by Akbar in the Mansadari, but Maharana Pratap was denying it. So he could not have such a great days that, like his colleague. But what we cherish is that his valors and sacrifices. So Battle of Haldi was fought for this principle, for upholding the righteous principle of sovereignty and independence. It is on June 18, 1576 that Maharana Pratap's small forces were pitted against the combined armies of Aghor and the Rajput states who had allied with the Mughals. So it is the you can say June 18, 1576 that the Maharana Pratap's small forces were pitted against the combined armies of Aghor and the Rajput states who had allied with the Mughals. So the time period of Battle of Haldi Kati is 1576, correct? 1576 is time period of Battle of Haldi Kati, correct? So the patriotic zeal of his generals like Hakim Khan Sur. So Hakim Khan Sur was generals. Was awe-inspiring, and though Rana Pratap retreated into the hills, he left the Mughal army trapped into total disarray. So there was who was the generals of Maharana Pratap, to Hakim Khan Sur tha, theek hai, and he was awe-inspiring. Though Rana Pratap retreated into the hills, basically it is said that Aravali Hills was the place where Maharana Pratap hid. So he left the Mughal army trapped in the total disarray. No retreat had ever been glorious, and for the Mughals, no victory was ever more like defeat. And all this happens due to patriotic offense of Rana Pratap. So no retreat has ever been more glorious, and for the Mughals, no victory was ever more like defeat, and all this happens for the patriotic offense of Maharaja Pratap. Why? Because if you see that if you see, because what happens is that Maharaja Pratap retreated back, and also Mughaliya Sultanate also did not did not achieve victory. That's why you just said that patriotic offense of Maharana Pratap, the hard-earned victory of Mughal could not fulfill its objective of complete subjugation. Memar finally, Maharana Pratap was not completely subjugated, and also the Mughals did not able to completely subjugate the Mewar. That's what it is say about the valors of Maharana Pratap. He continued resistance with his patriotic zeal till his death. That's why if you say that the why the B.S. Smith says that Maharana Pratap of patriotism was his offense. Why? Because neither Akbar or Mughals able to completely subjugate Mewars, nor Maharana Pratap was forced to surrender. Though he was forced to surrender, but he did not surrendered it. So but he just retreated back from the from the army field, from the right, from the battlefield. That's why you will find that he was why he say he's the only offense, because he has committed for motherland, he has fight for the motherland. Maharana Pratap fight for the motherland, and because though his colleagues like Sakti Singh, younger brother Sakti Singh, had also deserted him and become vassals of Akbar. And there are many, Man Singh was also colleagues, I would say, Maharana Pratap ka. So that's why he has also surrendered before Akbar, or enjoy the perks in Masatari. And so but as far as as far as Maharana Pratap is concerned, though he had retreated back and hid in the hills, but though he fight very valiantly, I would say. So Hakim Khan Sur was his general, so he was so inspiring, right? So though he was Maharana Pratap was able to uh, was able to feed his families, and though he did not have such so much military power like Mughals, but his resistance continued with the offense for his patriotism. So thus his resistance for his motherland is only his offense. So that is B. Smith. So obviously, imperialist historian. So he will say like this, right? So that's what it's all about.
So when I talk about the was Din Lai a monument of Akbar Falai, was Din Lai a monument of Akbar Falai? So it is like it's critical analysis of Din Lai, why it will become successful or not. No, no, it didn't become so much successful because it only Birbal was able to join this, no any other people or colleagues in Akbar joined this. That's why the statement is talking about your criticism of the Din Lai, though it was very much successful at the time. So Din Lai, like divine faith, was syncretic faith. So Din Rai, a syncretic faith propounded by Akbar in 1582. So this is the last time you say, because all the great policies of Akbar was related to 1570s, 1560s, like abolition of pilgrimage tax and Jajias. This is all event of 5070s, like, but in 5080s you'll find that the great things like the Nilais, the monumental aspects of Akbar's policy, even Sulaiman policies. So this is about 1580. So this 1580, it was a syncretic. It was the time when Din Ali was finally laid down. So it was syncretic faith propounded by Akbar in 1582 and intending to merge the best elements of various religions. This faith had many ethical principles like kindness, prohibiting lust. So this Deen Allah was like something you can say, I would say monotheist like. So this is very propounding and adhering to just one principles, or committed to just one principles, right? And this principles is like principle of conduct, right? This is a principle of conduct, and this is very important for, because if you try to propagate a you know religion which is adhered to all, which can be adhered by all the people, all your sections of population, then your empire will be flourished. That's why that what this is what done by the great ruler of India, Asuka. Asuka did the same thing, because the Dhamma was not a religion; it was a principle of conduct. It was a code of conduct. That's why, and it was adhered by the peoples or section of population during that time. That's why Asuka was able to weave out the empires, right? And in of India's subcontinent. That's why if you say Akbar was doing the same thing, so he was knowing about the what is called the so that's why he was trying to do this thing. But uh, if you talk about critical analysis of these things, so if we will get to know that no, this is something not so much successful. Why we will see it here. So this faith was had many ethical principles like kindness, prohibiting lust, etc. The Deen life function as a personality cult contrived by the Akbar around his own person. So it was not like spread too much around, because it was just confined to his own persons. Like members, like Nagatan, you can say members of religions were handpicked by Akbar according to their devotions to him. So members of religions were handpicked by Akbar according to their devotions to him. Historian Dr. Smith writes about Deen Ali, the whole schemes was the outcome of the ridiculous vanity, ये तो कहेगा ही ना, and monstrous growth of unrestrained autocracy. The divine faith was monument of Akbar Falai, not of his wisdoms. He further calls it a silly invention. So he was criticizing, Dr. B. Smith is criticizing the Akbar that it was like ridiculous. It is ridiculous vanity and monstrous growth of unrestrained autocracy. See, this is though it is very contradictory to the fact that though it led. So what we say about when we say about Deen light was like a conciliation between Hinduism, Islam, and non-Muslims, and it was like something syncretic nature of Mughal Sultanate. But what he's doing, he's saying it is a growth of unrestrained autocracy. So it is highest stage of autocracy. So monstrous growth of unrestrained autocracy. It is outcome ridiculous vanity. So it is outcome ridiculous vanity and monstrous growth of unrestrained autocracy. The divine faith was monument of Akbar Falai and not of his wisdom. So it is a Akbar Falai. It is not like wisdom what Akbar has propounded. It was not wisdom of Akbar. It was like it was a fault. It was a Falai, right? So it was highest stage of autocracy, that is unrestrained autocracy, and it was ridiculous vanity. So that's why it is totally so much harsh and censored word has been used by Smith against Akbar.
So basically, it is a personality cult, and it was associated with it was surrounded with all the colleagues of Akbar. So contemporary historian Badawi regards the founding of Din Ali as un-Islamic, and yes, obviously he was very much critical of the Akbar. So he said it is un-Islamic act, and Akbar was dubbed as heretic. Akbar was, dubbed as heretic. So that's it was un-Islamic. Akbar was heretic. The Jesuit missionaries charged Akbar of hypocrisy for founding Din Ali. Similarly, the Jesuit missionaries is also charging, uh, you know, Din Ali as a hypocrisy. This is very total hypocrisy. Many historians say Akbar had certain political motives to create a group who will always favor him. So many historians say the Akbar had certain political motives to create a group. Why Akbar created this group? Because so that I am creating this group so that the people who are members of this group will favor me eventually. That's why historians are saying. But if you say the सारे लोग आपके against हो जाए तब समझना आप अच्छे पालते हो. So that's why you say B.S. Smith is also against Jesuit missionary, also against his many modern historians also. But Akbar was doing the things what his heart was saying at the time. That's why if you say divine faith, it was like a monotheism, you would say, right? It was syncretic faith as well. Like in 1582 years, 1582 के आसपास में हुआ. It was like various religions को integrate, because if you say Jainism, Hinduism, Buddhism, सारे को इबादत खाना का टाइम जो 1570s के टाइम पीरियड में इबादत खाना उस टाइम में था. That's why you say after इबादत का you will find that this is a culmination of this tolerant attitude, or tolerant policy of Akbar. Like, but Deen Ali was not Akbar polite. So if you like to counter the argument of many historians as well as the B.S. Smith, you have to balance the argument. Like, it was not Akbar polite. Why? Because many historians fail to understand the true significance of Deen Ali. So many historians fail to understand true significance of Deen Ali. They relied on the evidences of Badawi, a hostile critic of Akbar. So what many historians are not able to understand Akbar, because why? Because they were following Badawi, and who was very critical. That's why he said that he was heretic. Akbar is heretic. He's Islam, un-Islamic doing things. He was doing Islamic. So that's why many historians have relied on the Badawi's work. So that's what you will see. And Badawi was an Orthodox Muslim with whom an omission of single ceremony of Islam amounted to apostasy. And on the writings of Jesuit who must have been displeased with the emperor for the Caliph. Hmm. Yes, Jesuit are also writing this. Why? Because Jesuit का एक main mission था कि why I would convert Akbar, but Akbar was not able to convert. So, so that's why if you say that the emperor was not converted into the Christianity, it is what things out by the Jesuit missionary. So so Jesuit missionary missions was believed, and his hopes were belied. That's why you see. That's what he will say this like this. So that's why. But only was also because he was hostile critic of Akbar, and also he was Orthodox Muslims. Emissions of single ceremony of Islam amounted to, even if there would be emission of single ceremony, omission of single ceremony of Islam amounted to apostates, and on the writings this amounted to apostasy. Even if you, so this was single. It was like it was very much Orthodox Muslim. So that's why if you say that the Balani will say like this, right? When we talk about the when we talk about the hmm. So Akbar had not founded Deen Ilai to satisfy his vanity. That what Smith was saying, to or play the role of prophet and pope. If he had been guided by these motives, he would have employed the whole state machinery for propagating his faith. So, अगर ये ऐसे करना ही होता अकबर को, तो he was employing the whole state machinery for propagating his faith. So अगर उसको faith ही कुछ करवाना था सारी machinery को, he was employed कर लेता. But the very fact that his close associate like Bhagwan Das, Man Singh, did not join the fold of the Nilaya. So अगर it was अगर इसका close associate Bhagwan Das, Man Singh did not join the fold of the Nilaya and continued to enjoy the old favors, it's clear proof that his experiment of a new order was not outcome his ridiculous vanity, but for the monstrous growth of ridiculous vanity for the monstrous growth of unrestrained autocracy. Because his close associate like Bhavan Das and Man Singh did not join the thing like. That's why if you say it's like really vanity and unrestrained growth of autocracy, it is not.
supported with the facts. Because अगर ऐसा होता ही है तो अगर वो तुम्हारा अनरिस्ट्रेंड ऑटोक्रेसी होता ही तो भाई मोहम्मद दास would have joined even by force used by the court. So when Mansi was not, so this means it was just a voluntary kind of relationship, or you can say agreement that for the okay, if you want to join this groups, just join, no problem. If you don't, no problem. That's why Akbar did not neither exhibit himself as a religious precept, nor did he make any book for the follower of his religion. So even also he did not make any book for follower of his religion. So अगर कोई भी religions का एक book होता है, so that their followers, lay followers could follow it, this principle, but he did not make any kind of books for followers of religion. According to R. Sharma, to allow Deen lie the place of religion will be certainly an exaggeration. Hmm. If you try to ascribe Deen and as a place of religion, if you try to mount a Deen and as a place of religion, would be exaggeration. It will be only proper to call it a sect or creed, because Deen and was not a new religion out of Islam, nor any efforts to separate it from Islam was ever made. So it was not like a new religions. It was not also like making a separate state, separate religion, separating from the Islam. So this is our is totally his balanced argument, right? So Akbar's motives in organizing the Deen lie as a new order was outcome of political necessity, not religious. It was just an outcome of political necessity, not a religious, right? Just as Akbar had conquered the whole of Indo-Pakistan, he also wanted to put the chief principles of various religions together and create new social order to build a common nation. So he was weaving the country, right? He was weaving the country. Akbar's foremost aim was the union of Hinduism under one head, which was difficult to achieve had he persecuted non-Islamic religion. So he was just trying to integrate one religion with another. So he was also trying to integrate Hinduism with the Islam. So union of Hindustan under one head, which was difficult to achieve. And so no, not as a Hindu, but not Hinduism. Sorry, but he was trying to integrate the Hindustan. There are many culture pockets of the Hindustan. So he was trying to integrate it with it. And with one head, which was difficult to achieve, and which he persecuted non-Islamic. Had he persecuted non-Islamic religion, so if Akbar tried to do the same thing like his earlier rulers were doing, right? Prosecution of non-Islamic religion like Mongol and Genghis Khan was doing non-Islamic religion. So if had Akbar was doing the same thing, he was not able to integrate Hindustan. So Deen Ilahi content was an admixture of different religions and it was supposed to bridge the differences between religions. So it was supposed to. So what it was doing, it was trying to bridge the differences between the religions. This was something is very important aspects of Deen life. So according to R.S. Sharma, far from being monument of Akbar for life, Deen life was crowning expression of Akbar national idealism. It was a crowning expression. Wow, क्या word use किया गया था कि Deen life was crowning expression of Akbar national idealism. Akbar का crowning expression of Akbar national idealism. Hence, Deen Ilai was not a monument of Akbar Fulai, it was a monument of his wisdom as political institution. Deen Ilai entirely fulfilled Akbar's hopes and expectations. As long as he was alive, he enjoyed loyalty of his subjects. Differences between religions were not large, and Mughal Empire remained vast and consolidated. So it remained consolidated and it was not a folly of Akbar. It was kind of wisdom. It was expressions, crony expressions of Akbar national idealism. So Akbar was also believing in idealism. So this is what it was trying to integrate the Union of Hindustan. The R.S. Amagacha statement to allow Din lies will be placed. It will be only proper to call a sect or creed because of Din lie was not religion out Islam and not any efforts to separate it from Islam was ever made. So it was or like so it was R.S. Sama's main criticizing against
व्हाट इज कॉल्ड पी स्मिथ आल्सो बदाऊनी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। आर एस शर्मा का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल आ रहा है एक तरह से। वी विल सी मेनली आर एस शर्मा इज सपोर्टिंग अकबर। और हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री अकबर वाज यूनिक फॉर हिज रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। सो यहाँ स्टेटमेंट एनालाइज करने के बारे में बात किया जा रहा है। So you will find you will have to give this certain kind of counter argument, though, or you can say limitations. Was Akbar completely successful in making his empire secular, or what we call as uh, you know you can say harmony, empire with harmony, or what we call what historians are calling national state? Was Akbar able to completely make the empire a very you can say secular empire, or empire where there was a reconciliation between Hinduism and Muslims, where there was a peace and harmony, or universal brotherhood among Muslims or Hindu is a Hindu. So this statement is talking about. So the uniqueness of Akbar's religious political ideas and policies is what the philosophy as Sula Kul or Wahadut Wujud. So it means peace, peace with all. If you talk about if you try to create a meaning of सुलह equal, it means that it is peace with all. सुलह कर लेना किसी के साथ, तो सुलह equal means peace with all. It stands for social harmony and end to the social conflict. It was like सुलह equal means सुलह कर लेना. It means you are trying to do what you are trying to ending the social conflict. You are trying to create a social harmony in the society. This philosophy is reflected in his policy, like ban. So if you say ban on the forceful conversion to Islam, abolition to of jizya, ये तुम्हारा 50-60s का आसमान हुआ। पिलग्रिमेज टैक्स को भी एबॉलिश किया गया 1560s के टाइम में। एंड प्रोहिबिशन ऑन द enslavement of war prisoners, yes, it's very important। war prisoners को भी पहले क्या होता था कि slaves were captured uh, and used in the used in the armies, and also whosoever was POW, that is prisoners of war, they were enslaved. What Akbar was doing, he prohibited enslavement of war prisoners. He also granting freedom of conscience. Yes, this is what Sulaykul means. That Sulaykul means is a broad principle like not forceful conversion to Islam, abolition jizyas and pilgrimage tax, and prohibition enslavement of war prisoners. This was thing. The policy of Din Ilahi also called Tawheed Ilahi. It was inspired from Tawheed Wajud of great Arab philosopher Ibn Arabi. तौहीद ए वजूदी, यू कैन से तौहीद ए वजूद ऑफ ग्रेट अरब फिलोसोफर इब्न अरबी का एक फिलोसोफर है, उसी से इंस्पायर हुआ इब्न अरबी, जो कि तौहीद ए वजूदी ने एक तरह से मतलब वो अपना प्रिंसिपल्स दिया था. सो इट वाज लाइक इट रिप्रेजेंट्स द फिलॉसफी ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग. सो द तौहीद ए वजूदी का एक इट रिप्रेजेंट्स द फिलॉसफी ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग, द यूनिटी ऑफ हक, द क्रिएटर एंड खल्क, द क्रिएटेड वंस. So unity of haq, the creator, and khalq, the created ones. So haq is creator. So tawhid, if you try to know the aspect of tawhid light, it has two components. First is that it is a like unity of haq. There is one is created and there is another is created ones. A creator है, like same like Hinduism में क्या है, uh, what Shiva is called destructor. Shiva was destructor. Vishnu, Brahma was creator, and Vishnu was a preserver. In the same concept, if you say in Tawhid Ilahi, it was a haq, that is unity of haq is creator and the khalq is created once, with means all beings are the same and the manifestation of the divine substance, right? All one are the same, right? So Tawhid Ilahi does a unity of it is unity of being, that is we all are united, right? It was an order of which anyone could become a member of irrespective of his religion. Birbal Hindu was member of this order. Tawhid Ilahi का जो members था Birbal था, बस I told you Birbal was only member of Deen Ilahi. No, Bhaman Das और मान सिंह तो बना ही नहीं थे. तो construction इबादत खाना for debate. This is also important for the fact that uh, ये तुम्हारा टाइम पीरियड इसका 1570s का आई थिंक बात कर रहा. The purpose was debate, discussion, discourse over the religious issues. He invited representatives of all the religions like Hinduism, Islam, Christianity, and Jainism. Jainism में हेमंत सूरी था. It strengthened his conviction that truth is not confined to one religion, and behind the multiplicity of names is one God. Right.
It says truth is not confined to one religion. It says truth is not just confined to one religion, and behind the multiplicity of names in the one God. So issuing of yeah, I guess this is what likes is why this Wal Khan was constructed, just because that truth is not just confined to one religion, and behind the multiplicity of names is one God. So why we have a hell lot of gods? Because there's only one God, the unity of God. So and all gods are the same. So that's why it was about no issuing a mazhar in this it is also called infallibility decree. ये नाम दिया गया infallibility degree का ये तुम्हारा ये सूट का एक बार आ गया yeah it was royal orders or decree to proclaim the supreme position of the king in conflicting interpretations of Islam. Wherever there will be conflict among Islams about principles of Islam, I am the sole emperor, I am the sole authority to resolve this conflict. That was mazhar means, right? Mazhar means वही होता है infallibility degree. I am the infallible. I will order what the things which is infallible. So it subordinated the position of theologians and proclaimed the king as not only political head but also a spiritual head. He says king is not a political head, just it is also a spiritual head. I am the superpower. I am the super boss. All my orders are is like is infallible, and this what it happened. It led to it subordinated the position of theologian. Earlier, there is something you will find that theologists were also supreme. For the saying of theologians there was called it divineness, divine saying. So whatever the theologians used to say to the rulers had to abide, but there was many rulers who did not abide. For example, Balwans and others, Raudan Khalji ne kuch nahi kar paya. So, so that was that's what it is talking about. The theologians play a very important role. But what during the time Akbar, the position of theologians had been subordinated because this introduction of Dharka Darshan of prostration before king. So this he created provincial system that is Suba system. So this is fine that Akbar ने ये सब का विवाद खाना किया सुबह एक जो कि वधू थे वधू के साथ जिसमें क्रिएटर हक और क्रिएटेड वंश का बात किया जा रहा है तो एक तरह से सुलह एक हो गया ईस्वी का मदर हो गया so in Jharkhand Darshan का introduction हो गया he created provincial system that is Suba system he created Mansabdari Jagidari system he created complete nobility based on talent so hmm, अब आते हैं राजपूत पॉलिसी बहुत बड़ा The Rajputs as a Mansabdar, Subedar and military commander. राजपूत का बहुत बड़ा अकबर ने राजपूतों को एक बहुत बड़े एक तरह से अच्छे से ट्रीट किया उनको मनसबदार का एक पोजीशन दिया गया उनको सूबेदार का पोजीशन दिया गया उसको एक तरह से जागीरदार वीकेंड से वतन जागीरदार भी उसको दिया भाई आपका जहाँ आप रहते हैं आप वहीं आपको जागीरदार एक तरह से दिया जाएगा ठीक आप वहीं अपना उस जगह से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए कोई जरूरी नहीं कि आप दूसरी जगह पाइए आप वतन जाके वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम concept because it fits that Akbar was respecting their homeland, their territories of Rajput. That's why if you say that's why matrimonial alliances and the freedom of to the Rajput wives to practice religious. It was great respect of Akbar that he what he did he tried to he gave the freedom of respecting the wives, respecting the wives and their religions, right? So he was also why because who was the first matrimonial matrimonial what was the first matrimonial alliance? तुम्हारा था तो तुम्हारा हरका भाई जो कि who was the daughter of the बिहारी बिहारी भारमल यस भारमल का डॉटर था तो भारमल पहली बार ऑफर किया कि भाई आप हम भारमल जो था राजा आमेर आमेर का था वो राजा था दैट एंड ही ऑफर्ड अकबर दैट यू जस्ट यू टेक माय सिस्टर टेक माय daughters and you please do let's have wedlocks between you and my daughter. So for the first time, if you say the matrimonial alliances between Akbar and the Harmal, no, or Raja of Amir. So this was also because this also happened in the backdrop when Akbar was creating the mausoleum for Sheikh Salim Chisti in Ajmer. अजमेर में जब वो शेख सलीम चिश्ती का जब मकबरा बना रहा था अकबर एक तरह से टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती तो उसी टाइम में जो ये जो क्या बोलता है अजमेर आता है ये दिस इज Ajmer is situated on the trade route and also ये आमेर भी उसी route में situated होता है. It was a strategic you can say a place Amir
और अमेर भी उसी ट्रेड रूट में एक तरह से सिचुएटेड था। तो दोनों से कोइंसाइड हो रहा था, अमेर भी वही रूट में था और अजमेर भी उसी रूट में था। तो देखते से इसी को देखते हुए तो हारमल जो उस टाइम में थे, आमिर के राजा थे, तो उसने एक प्रपोज किया कि यू जस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर। अकबर से कहा भाई ये ऑफर को आप एक्सेप्ट किया, फाइनली अकबर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हर का भाई पहली बार वहां से एक तरह से आता है, राइट। तो पहला वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस, तो फिर बाद में जहांगीर ने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया, राइट। जो हरका भाई से जहांगीर ही सलीम सलीम जिसका नाम है उसको पैदा हुए, तो बाद में जहांगीर मैट्रिमोनियल अलायंसेस करता है। आई डोंट नो शाहजहां भी किया ही होगा। तो about the Deccan policy of Akbar. Diplomatic missions to Deccan. He also sent diplomatic missions to Deccan. So military campaign and annexation of Khandes and parts of Ahmednagar. Yes. अगर हम बात करें खानदेश वगैरह का जो समय है, और अहमदनगर खानदेश वगैरह का जो इसने एनेक्सेशन किया, लेकिन अहमदनगर का कम्प्लीटली एनेक्सेशन तो शाहजहां के टाइम पे होता है, ठीक है। शाहजहां वाज एबल टू एनेक्स द अहमदनगर। सो military campaign and accession of Khandesh parts Ahmednagar. So many of his ideas and policies were unique, but there were also elements of similarity. According to Badawani Akbar, he imposed jizya in 1575. I told you because इसमें कहीं न कहीं एक तरह से critical analysis करें, analyze statement है, तो analyze statement है तो कहीं न कहीं critical analysis आएगा ही आएगा। तो it was like अकबर ने दोबारा इसको क्या बोलते हैं जिजिया को reimpose कर दिया। कब? तो भैया किया है ये तुमको किया है 1575 में, 1575 अकबर reimpose jizya, right? In the Fatnama of Chittor in 1568, he declared war against Rajput and Jihad. जिहाद पे मतलब एक तरह से डिक्लेयर किया 1558 में, and took pride in the destroying temples and killing Hafiz. I don't know what sources कहाँ से लिया गया, maybe अकबर ने डिस्ट्रॉय किया, I don't know, बहुत कंट्रोवर्शियल है भाई। बलवन also introduced बलवन पागल हो गया भाई क्या? बलवन का इंस्पेक्ट कहाँ से है भाई? अच्छा ये दो गलती हुआ है शायद। एनीवे द व्हाट अकॉर्डिंग टू बदाऊनी अकबर इम्पोज जिजिया इन 1575। 1575 में अकबर ने जिजिया को इम्पोज किया। दिस वाज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकबर। सो सो 1575 the time maybe jizya was not so much a harsh tax on Hindu imposed on Hindu. So तो एक तरह से ये कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा कुछ। सो उसके बाद आते हैं इन द फातनामा ऑफ तो इन 1568 ही डिक्लेयर वार अगेंस्ट राजपूत एंड जिहाद टू प्राइड इन डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स एंड किलिंग काफिर्स। 1568 में फतनामा आता है तुम्हारा, पहली बार, ठीक है। फतनामा 1568 में, 1575 में you will have reimposition of jizya in 1575 and annexation of Khandes you will have the this time, that's right. Talking about the तो क्रिटिकल एनालिसिस भी हो गया। उसके बाद थोड़ी सी वी हैव डिस्कस द तरका दर्शन स्विंग ऑफ मजहब, वी हैव डिस्कस इबादत खाना डिबेट, दिन लाई एंड फिलॉसफी सुलाकुल व्हिच इज द ट्राइब फ्रॉम द वहदत वजूदी व्हिच इज नथिंग बट इसमें दो बात का हक और कल्क। हक और हक ग्रेटर हो गया और कल्क इज क्रिएटेड वंस, करेक्ट। हक एंड कल्क, करेक्ट। यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन सब्सटेंसेस। अब आते हैं गिव एन एस्टिमेट ऑफ अकबर एज अ प्रोमोटर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अकबर वाकई में टेक्नोलॉजी का प्रमोटर था। वी हैव टू टॉक एस्टिमेट्स, क्या हुआ कि नहीं हुआ, एस्टिमेट्स एस्टिमेशन ऑफ अकबर एज प्रमोटर टेक्नोलॉजी। मुगल एम्परर अकबर promoted technology even said to be invented many technological himself। बाकी तो जहांगीर के टाइम में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अकबर भी कुछ बहुत किया। ही वाज इन्वेंशन कार्ट मिल, invention of cart mill, a cart which mined with grain while it will move was invented by Akbar as claimed by Abul Fazl। अबुल फजल के अनुसार जो कार्ट मिल है वो अकबर ने ही बनाया।
और हम बात करें काटमिल का, काटमिल क्या करता था, वो ग्रेन्स को मिल करता था, while it was मूव। Though cartmill was invented, but it move was invented by Akbar as claimed by Abul Fazl. Though one historian of Akbar court, Nizamuddin Ahmad, attributed it to Akbar's courtier Fatullah Siraji. तो ये एक तरह से डिबेटेबल बात हो गया, फतुल्ला सिराजी ने भैया इसको क्या किया, क्रिएट किया। अबुल फजल बोल रहा है भाई कार्टमिल का इन्वेंशन अकबर ने किया है, जबकि एक हिस्टोरियन है निजामुद्दीन अहमद अकबर की कोर्ट का, वो बोल रहा है भाई ऐसा है कि ये फतुल्ला सिराजी ने किया है। द इन्वेंशन हैज ए प्रेसिडेंस इन टाइम्स, द यूरोपियंस कार्टमिल वाज अपीयर्ड ओनली इन 17th सेंचुरी। ये इसका जो अगर बात 17th सेंचुरी में ही फाइनली यूरोपियंस का कार्टमिल आया, लेकिन तो कह सकते हैं चलो ठीक है, नहीं भी कुछ किया तो कुछ तो किया ही होगा अकबर ने। तो एक कार्टमिल ने एक तरह से इसको इन्वेंट किया, सो ही वाज इन्वेंटिंग द कार्टमिल। तो निजामुद्दीन अहमद का कहना है कि भैया फतुल्ला सिराजी ने किया है, ऐसा फतुल्ला सिराजी ने किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यूज ऑफ सॉल्ट पीटर फॉर रेफ्रिजरेशन। ये बिहार सॉल्ट पीटर जो हमारा हम लोग के एरिया में होता था, बिहार आसपास में पटना में हो गया, सारण एरिया में। तो Akbar discovered the use of saltpeter to achieve refrigeration. So he used saltpeter for achieving refrigeration. It was practice found only in India and it had precedence in time over chemical devices for refrigeration in Europe. जब यूरोप में सारे यूरोप जब केमिकल डिवाइसेस यूज करते थे खास रेफ्रिजरेशन फॉर मेकिंग द थिंग्स प्रिजर्व, तो उस टाइम में अकबर भाई एक अच्छा उसका तरीका ढूंढा था, वो सॉल्ट पीटर को यूज किया जाता था रेफ्रिजरेशन में, which moreover required snow for initiating the process. So उस टाइम में यूरोप में स्नो का यूज किया जाता है भाई, वहाँ ठंडा प्रदेश है तो obviously you will use snow for making things preserve, but Akbar was doing what saltpeter का यूज करके, so he used saltpeter for refrigeration. Invention in artillery, अब आते हैं आर्टिलरी का इन्वेंशन क्या क्या। टू इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस इन आर्टिलरी वाज ascribed to him. First, in order to enable cannon pieces to be transported easily, he had cannon so made the individual part could be discharged and then reassembled. इसने क्या किया कि प्रॉब्लम क्या होता है कि कैनन का जो कैनन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव कैनन, सो व्हाट ही डिड, ही नीड टू एनेबल कैनन पीसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो कैनन का पीसेस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ही हैड द कैनन सो मेड दैट इंडिविजुअल पार्ट कुड बी अटैच्ड एंड देन उसने क्या किया भाई, ऐसा है कि लेट्स भाई दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करो इंडिविजुअल पार्ट को आप क्या करो डिटैच कर दो, बाद में उसको रीअसेंबल कर दो। तो एक तरह से उसको असेंबलिंग और डिसेंबलिंग ऑफ cannon pieces was made by Akbar. The second was to arrange to have as many 70 cannon pieces fire in unison. दूसरा काम क्या किया कि भाई 17 के 17 पीसेस कैनन के पीसेस को एक यूनिसन में आप अरेंज कर दिए, क्योंकि जितना आप पीसेस को जितना बारीकी से तोड़ेंगे उसको पीसेस को अलग सब पार्ट्स को सेपरेट करोगे, उतना आसानी होगा आप ट्रांसपोर्ट करने में। बाद में क्या करो आप उसको जोड़ लो जब भी आपको अटैक करना हो शत्रु के ऊपर। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो असेंबलिंग ऑफ द कैनन पीसेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कितने सारे आप यू नो ट्रांसपोर्टेशन यूज मीडियम से ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंशन इन आर्टिलरी में किया गया। तो शॉर्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन कार्ड मिल का हो गया। उसके बाद आते हैं इन्वेंशन इन मस्कट्स। यस, अबुल फजल से दैट अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ मस्कट्स। अब मस्कट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने अकबर बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। चेंज मैन्युफैक्चर ऑफ बैरल्स इज टाइप में, बैरल्स उसने चेंज ही कर दिया। अकबर के टाइम में जो बैरल्स हुआ करता था वो चेंज बैरल्स हुआ करता था। Instead of just winding in a sheet of iron around a metal tube and wielding its edge, far more strength was now imparted to barrel by adopting a new method which included use of twisted iron sheet and use of more than one iron sheet. तो अकबर ने एक ऐसे आसानी से बैरल्स का बनाया, इसमें कि पहली बात क्या होता था, आप क्या करते थे, आप मेटल ट्यूब को एक तरह से अब मेटल ट्यूब के चारों ओर एक उसको बैलेंस बनाने के लिए यू टेक ए मेटल ट्यूब एंड यू जस्ट roll out a sheet of iron around metal tube and you just building its edges. Far more strength was now imparted to the barrels by adopting new methods, uh, which included the use of twisted iron sheet. आप क्या किए, आप भाई आप पहले उसको आपको बुनना पड़ता था एक मेटल ट्यूब के चारों ओर। आप क्या करो, you don't require to just wind it, but you just require a twisted iron sheets and use a more than one iron sheet. आप just आपको इसमें एक twisted iron sheet require and use a more than one iron sheet.
तो इस तरह से आपको जो मोड़ना पहले होता है, molding around pieces of iron. You don't require, you just require a twisted iron sheet and use a more than one iron sheet. When you will use more than one iron sheet, you don't require just revolving around the iron pieces of iron. The added strength allowed the barrels to be packed with a larger amount of gunpowder. So when you have more than one iron sheet, you can able to pack the larger amount of gunpowder. So you will more the iron sheets, more the gunpowders could be attached here. So you are just trying to have a larger amount of gunpowder. Why? Because how you will have larger amount of gunpowder by having more than one iron seed. Earlier बहुत कम ही iron seed होता था, तो आपको मोड़ना पड़ता था. अभी क्या है कि आपके पास बहुत सारा आयरन सीड है, तो आपको मोड़ना नहीं पड़ेगा. So for smoothing the inside of barrel, Akbar or his mechanics invented a superb device whereby animals' power could be used to rotate drills inside the barrels. आप क्या इसमें क्या बोल रहा है कि अकबर ने क्या किया, सुपर डिवाइस बनाया. कैसे भैया? whereby animal power could be used to rotate drills. You will use animals' machinery or animals' power to rotate drills inside the barrels of several muskets simultaneously. तो barrels के जो होते हैं अंदर में, you will use rotating, you will use the manual power to rotate drills inside the barrels of several muskets simultaneously. तो drills के animal power use किया गया in rotating drills inside the barrels. इन्वेंशन ऑफ शिप्स कैमल्स, तो शिप्स कैमल का भी एक तरह से इन्वेंशन किया गया. तो शिप्स का, हालांकि शिप्स का जो अराइवल है, रियल शिप्स टेक्नोलॉजी आता है यूरोपियन के आने के बाद. अब बोल रहा है कि इन्वेंशन ऑफ शिप कैमल्स. एक अकबर एक्सपेरिमेंट्स इन शिप बिल्डिंग कंटेन द स्ट्राइकिंग इन्वेंशन शिप कैमल्स. अकबर ने शिप कैमल्स का भी अच्छा तरह से काम किया. तो शिप कैमल्स, when a ship built in Lahore was sent down the river to Lahari Bandar. लाहौरी बंदर जो सी पोर्ट ऑफ सिंध हुआ करता था, ठीक है. इट्स पैसेज वाज ग्रेटली इंपेक्टेड इन द रिवर रावी सैलो स्ट्रेचेस, ठीक है. when शिप बिल्ट एट लाहौर, जब लाहौर में शिप बिल्ट हुआ, तो इसको लाहौरी बंदर, है ना, की तरफ भेजा गया विद द हेल्प विद थ्रू रिवर्स, राइट. इट्स पैसेज वाज ग्रेटली इंपेक्टेड इन द रिवर. उसका जो आसानी से वो रिवर के चारों रिवर को पार करते हो, है ना, चले गया. मतलब यू ट्राई टू बिल्ड अ शिप इन ऑर्डर टू so that the ships can easily transgress it, transpass the ships, transpass the rivers easily without without any problems or difficulty. So you try to make a design or ship in such a way though, so that is so that it could be transported. It could be, it could be sent down the rivers, right, without any difficulties. And so he just so what he did, he tried to send the ships in a Ravi river in a shallow stretch. So when a new heavy ship was planned, it was constructed on barge upon which, जब कोई भी ships बनाया जाता था, तो it was planned ships. Earlier it was not so much planned ships. No, अकबर के टाइम पे planned ships बनने लगा, and it was constructed on a barge upon which, after the completion of construction, the ships was carried the long way down the Indus River to Lahari Bandar. तो जैसे ही ये शिप्स बना, तो लाहौरी बंदर के, इंडस रिवर टू लाहौरी बंदर, आई मीन ये इंडस रिवर की तरफ से लाहौरी बंदर पहुंच गया. शिप्स का एक तरह से इन्वेंशन, शिप कैमल्स का इन्वेंशन किया गया अकबर द्वारा इन सच ए वे दैट it could be easily transpassed, it could be easily carried down the rivers to lahari bandars, right. जो कि सी पोर्ट ऑफ सिंध हुआ करता था. अब आता है मेटल रॉकेट्स एंड स्वॉर्ड. मेटल रॉकेट्स एंड स्वॉर्ड, तो अकबर यूटिलाइज मेटल सिलेंडर रॉकेट का यूज किया गया, पर्टिकुलरली अगेंस्ट वार एलिफेंट. अकबर ने वार एलिफेंट को छोड़ करके एक तरह से मेटल सिलेंडर रॉकेट्स का यूज किया गया. एक मेटल सिलेंडर. अकबर इज नोन टू हैव बिल्ट लार्ज फाउंड्रीज प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी स्वॉर्ड ब्लेड्स. सो अकबर ने एक बेस्ट क्वालिटी का स्वॉर्ड ब्लेड यूज किया गया. अकबर बेसिकली रॉकेट्स का यूज किया गया, मेटल रॉकेट्स और स्वॉर्ड का यूज किया गया, है ना. पहले क्या होता था कि वार एलिफेंट को यूज किया जाता था, ठीक है. अब ने अकबर ने क्या किया कि एक सिलिंड्रिकल रॉकेट्स बनाया गया, मेटल सिलिंड्रिकल रॉकेट्स जो कि सिलिंड्रिकल एस्पेक्ट्स में होंगे. इसका ड्रॉबैक्स क्या है? क्योंकि एस्टिमेट का क्वेश्चन था, एस्टिमेट, तो ऑब्वियसली यू विल हैव गिव द लिमिटेशंस. But although a number of scientific inventions which developed under Akbar saw a spirit of inventiveness, this did not spread out because the ruling classes had little interest in devices affecting the other class. प्रॉब्लम क्या था भाई? ये तो बस प्रॉब्लम क्या था कि ये मुगलिया सल्तनत के
के चारों ओर बस था, लोगों में नहीं पहुंच पाया। जी, मेन पर्पज ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू ease the difficulty of lower classes, because lower classes only who was employing the works. Yeah, बस if you try to see, टेक्नोलॉजी का स्प्रेड तभी होता है, तब टेक्नोलॉजी का स्प्रेड होने के बाद क्या होता है कि लोगों का काम आसान हो जाता है, बट व्हाट यू डिड, यू ट्राई टू कन्फाइन among the ruling classes. You are not able to you don't have any kind of interest to take this technology into the laboring classes. They had utmost contempt for those who work with their hands. So they had utmost contempt for those who work with their hands. Akbar experiment of working in the karkhanas with his own hands was not continued by any of his successors. प्रॉब्लम क्या अकबर ने किया, लेकिन अकबर के सक्सेसर ने कुछ काम नहीं किया. अकबर experiment of those who work with their hands. Akbar experiment of working in the karkhana with his own hands was not continued by any of his successors. Hence, an attempt of using science and technology into improve productivity or product was beyond their key. तो एक तरह से वो भी बाकी के सक्सेसर ने उसको कुछ खास काम किया नहीं, और it did not spread because ruling classes had little interest in dividing affecting lower classes. तो ये भी था. हम्म. अब आते हैं नूर जहाँ के ऊपर शॉर्ट ऐसे. तो इसमें हमने देखा है किस तरह से मेटल रॉकेट का यूज किया गया, किस तरह से स्वॉर्ड यूज किया गया, किस तरह से शिप्स कैमल्स का यूज किया गया लाहड़ी बंदर तक पहुंचाने के लिए. यू विल हैव अपार्ट फ्रॉम यू हैव सी मस्केट से किस तरह यूज किया गया, आयरन सीड्स का यूज किया गया है ना तुम्हारा. फिर इन्वेंशन आर्टिलरी को इन्वेंटेड किया गया है ना. फिर सॉल्ट पीटर यूज किया गया, फिर से काट मिल का बनाया. तो इस तरह अकबर का एक टाइम में यू कैन से दो क्वेश्चन बनता है, अकबर के टाइम में टेक्नोलॉजी क्या हुआ करता था, अकबर ने कैसे प्रमोट किया टेक्नोलॉजी को, है ना? तो इस तरह से वी हैव सीन हाउ अकबर वाज प्रोमोटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. सो अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चंस की ओर, तो इसमें हम जानेंगे राइट ए शॉर्ट ऐसे और नूरजहां. तो नूरजहां का जो एक अच्छा एक रोल आता है, जुंटा का रोल आता है. तो जहांगीर के टाइम में नूरजहां वाज अ डोमिनेटिंग लीडर लेडी, बिकॉज शी वाज अ वेरी एजुकेटेड डोमिनेटिंग लेडी, एंड she was also astute. So it is said that historians are saying that जो भी पॉलिसीज हुआ कर जहांगीर का, तो उसमें अकबर उस टाइम में नूरजहां का जो जो भी पॉलिसीज होता था, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता था इसको, जहांगीर को. तो जहांगीर पॉलिसीज वाज टाइम एंड अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय नूरजहां जुंटा. तो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस का एक काउंटर आर्गुमेंट है, भाई ऐसा नहीं है, जहांगीर जो भी डिसीजंस लिए हैं आपने बदल लिए हैं, जहांगीर के ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था नूरजहां का. तो इस तरह से वी हैव सीन दैट. पर दोनों आर्गुमेंट को आप जब मिलाते हैं तो एक बैलेंस आर्गुमेंट बनता है. कुछ किसी किसी में हुआ होगा, किसी किसी में नहीं हुआ होगा, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, बैलेंस आर्गुमेंट. तो नूरजहां चाइल्डहुड नेम वाज मेहरुनिसा. ओके, ही थी वाइफ वाइफ ऑफ जहांगीर. सी वाज डॉक्टर ऑफ मुगल नोबल मिर्जा गयास बेग. यस. और कहीं ना कहीं जहाँ का आर्किटेक्चर बनाया गया, इसका ग्यास बेग का बनाया गया, उसका टॉम बनाया गया, राइट. जहांगीर मैरिड हर इन 1611 AD एंड सी adorned her with literary title नूरजहां द लाइट ऑफ वर्ल्ड. उसका ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था, लेकिन बाद में उसका टाइटल अडॉप्ट कर लिया गया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, टॉम ऑफ इत्तिमाद उद्दौला, जो कि कंप्लीटली पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि कंप्लीटली व्हाइट मार्बल से बनाया गया. दिस इज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट दिस इज कंप्लीटली मेड आउट ऑफ द व्हाइट मार्बल. इट इज अबाउट टॉम ऑफ इत्तिमाद उद्दौला. सो इत्तिमाद उद्दौला जो कि फादर हुआ करता था नूरजहां का. फिर आसफ खान का भी टॉम टॉम बनाया गया. आसफ खान वो भाई हुआ करता था तो नूरजहां का. तो they were the part of juntas. आसफ खान was a part of juntas. तुम्हारा ग्यास बेग जिसको बोलते हैं, इत्माद दौला वाज पार्ट ऑफ जुंताज. अपार्ट फ्रॉम दी नूरजहां की जो मदर हुआ करते वो भी जुंटा के पार्ट हुआ करते थे, राइट. उसके बाद खुरम भी हुआ था भैया. खुरम भी एक तरह से पार्ट, खुरम भी था पार्ट था इसका, है ना, इसका, राइट, जुंटा का, राइट. खुरम कौन था भाई? ये तुम्हारा सन इन लॉ दामाद था किसका, तो आसफ खान का दामाद था खुरम. she had interest and knowledge in it, so that's why आजम खान का दमाद होने का इन लोग को एक तरह से शामिल किया गया. खुसरो भी शायद था, खुसरो भी था, खुसरो भी इसका पार्ट था जनता का. तो इस तरह से we have seen that she had interest and knowledge in administration. I told you because
He was very much educated at the time. She was dominating lady, right? Educated and very soft and clever lady, right? बहुत तरीके से बहुत तरीके अपनाए है ना. She had interest in knowledge and administration, politics, economics and culture. So influence in politics and administration. किस तरह से politics and administration में उसका influence रहा है. She was an influential woman in politics of her time. During the time she was very much influential. Jahangir began to come under her influence. Her name along with that of Jahangir began to be engraved on coins and the royal edicts. पहली बात यह है कि जब उसका जो जो फोटो है और जहांगीर के साथ ही क्वाइंस पे इनक्लेव हुआ करता है रॉयल एडिक्ट्स विच वर आल्सो इशूड इन हर नेम्स. जहांगीर के बाद एक अच्छा फैक्ट है कि जो अशोक का जो उसके बाद इलाहाबाद प्रसिद्धि है, इलाहाबाद पिलर्स जो है उस पे तो अशोक का तो है ही इंस्क्रिप्शन. उसके बाद तो समुद्रगुप्त का है ही. उसके साथ साथ जहांगीर का भी उसमें मिलता है, सिग्नेचर वगैरह किया होगा. एडिक्ट्स तो नहीं कह सकते, इंस्क्रिप्शंस भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जहांगीर का भी कहीं ना कुछ में साइन वगैरह और कहीं ना कुछ कुछ वाक्य हैं लिखे हैं, वाक्याएं लिखे हैं कुछ कुछ. तो तीन मतलब एक तरह से तीन पर्सनैलिटी का वो एक साइन आता है, और एक तरह से इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर. तो खैर जहांगीर कहीं ना कहीं उसको बहुत इंटरेस्ट था लिखने में, पढ़ाई करने, पेंटिंग भाई. ही वाज सो मच फॉन्ड ऑफ पेंटिंग दैट ही उसने कहा कि कोई भी पेंटिंग मेरे सामने प्रस्तुत करो, आई विल डिस्क्रिमिनेट एक दूसरे से. आई विल एबल टू रिकॉग्नाइज दिस हैज बीन बिल्ट बाय दिस आर्टिस्ट. मेरे मेरे जो शासन काल में जो भी आर्टिस्ट कारखाने में काम करते हैं और एटलियर में काम करता है, आई कुड एबल टू डिस्टिंग्विश. मेरा आंख जो है सारी जो पेंटिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकता था. सो मच ही वाज सो मच फॉन्ड ऑफ द पेंटिंग दैट. सो दैट्स व्हाई ही इसको लिखाई पढ़ाई में बहुत बड़ा उसका इंटरेस्ट था. सो दैट ही आल्सो इनग्रेव ऑन कॉइन्स. So Jahangir, along with the Jahangir, the name of Noor Jahan was also engraved on the coins and royal edicts is issued in her. Royal edicts were also issued in her name. So that's an important fact. Slowly, Jahangir entrusted the reins of the government to her. बाद में क्या हुआ कि जहांगीर ने उसको भैया अपना कारभार संभालने के दे दिया गया था. सी कैरिड ऑन गवर्नमेंट वेरी competent in every. She was praised for her systematic administration, her frugal living. Yes, she rendered great economy in the expenditure of royal palaces by her wise management. So ऑब्वियसली लेडी थी उस टाइम में, एक तो से इकोनॉमी का कारभार संभालने का एक अच्छा इसका एक तरह से था. तो सी रेंडर्ड ग्रेट इकोनॉमी इन द एक्सपेंडिचर एंड ऑफ द रॉयल पैलेसेस बाय हर वाइज मैनेजमेंट. सो उसकी उस टाइम में क्या था कि अकबर के जैसे ही अपना शासन काल छोड़ा तो अकबर के ऑब्वियसली जो ट्रेजरी वगैरह होते थे, बहुत पैसा खजाना वगैरह होगा, तो फाइनली वो मैनेजमेंट करते थे वही. Her influence in political spheres was also quite adverse because she began to misuse her power. So later on, she began to misuse her power. पैसा वगैरह देख के तो पावर का मिसयूज क्या करना है. सी ऑर टू इंक्रीज एंड मेंटेन हर इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन, सी मैरिड हर डॉटर लाडली बेगम. सी अपना डॉटर को जो उसका लाडली बेगम था फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज इस शेर अफगान. पहले लाडली बेगम का जो उसका लाडली बेगम जो था उसका शादी पहले शेर अफगान के साथ था. बाद में क्या हुआ कि जो नूर जहां की जो डॉटर है लाडली बेगम, उसने जहांगीर के सन शहरयार उससे शादी करवा दिया. शहरयार वाज द जहांगीर सन्स एंड देख रहा है दिस कनेक्शन आर यू सेइंग. डॉटर नूर जहां का डॉटर लाडली बेगम, ठीक है, और लाडली बेगम और जहांगीर का सन शहरयार, ठीक है, उससे शादी करवा दिया गया. She tried to make Shahryar the successor of Jahangir. She tried to make Shahryar the successor of Jahangir instead of Prince Khurram Shahjahan. शाहजहां को हटा करके शाहयार को चाहता था भाई ये आ जाए. She appointed her relatives in high posts. So that's why this is a critical argument that she appointed her relatives in high posts. These dirty tactics of favoritism brought difficulty for Jahangir as revolt began to take place and some territories were lost. Kandahar was snatched from Mughal control and Prince Khurram revolted. So finally, Kandahar was snatched from Mughal control. Yes, Kandahar was very much strategic place for Jahangir, and not for Jahangir, but also Shahjahan. During Shahjahan, also you will find that Kandahar was lost, completely lost. तो इसलिए तो शाहजहां के टाइम में यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ बल्क कैंपेन हुआ था सो दैट ही कुड एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर्स इन अफगानिस्तान सो दैट ही कुड एबल टू get back he could able to hold back the Kandahar, but he could not able to hold back Kandahar. Shahjahan finally lost Kandahar despite of the bulk campaign. तो अगर बात करें हम तो जुनता इसका बात करें तो लाडली बेगम जो डॉटर थी किसका
नूरजहाँ का, और नूरजहाँ का डॉटर थी, पहले इसका शादी हुआ था शेर अफगान के साथ, बाद में क्या हुआ जहांगीर के साथ, जहांगीर के जो बेटे थे शाहयार, जहांगीर के जो बेटे थे शाहयार, और उसके साथ शादी करवा दिया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ उसको बोले कि भाई शाहयार आप भाई सक्सेसर बन जाइए, जहांगीर को छोड़िए हटाइए, प्रिंस खुर्रम जो है शाहजहां उसको हटाइए, सी अपॉइंटेड हर रिलेटिव्स इन हाई पोस्ट। तो दिस टैक्टिक, सो ब्रेवरी का ये किसका पॉइंट है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज शाहयार को सक्सेसर बनाने के लिए कहा है। उसके बाद ये सब आता है ब्रेवरी, अब ब्रेवरी के बारे में बात करते हैं। सी वाज ब्रेव एंड कोरेजियस वुमन एंड यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग विद जहांगीर। Yes, एक फोटो भी है, एक पेंटिंग भी है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जहांगीर और जो तुम्हारे नूरजहां साथ में हंटिंग के लिए गए हैं। तो वो पेंटिंग भी है, दैट्स व्हाई शी वाज ब्रेव एंड ही वाज करेजियस, शी वाज करेजियस एंड यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग विद जहांगीर। तो एक पेंटिंग भी है, तो शी हैड शोन करेज व्हाइल हैंडलिंग द रिवोल्ट ऑफ महावत खान। ये इंपॉर्टेंट है, करेज तब दिखाया जब महावत खान का जो रिवोल्ट हुआ था तब उसको हैंडलिंग कर लिया था। In 1626, the Emperor Jahangir was captured by rebels while on his way to Kashmir. जब जहांगीर कश्मीर जा रहा था 1626 में, तो उसको कैप्चर कर लिया गया किसके द्वारा, रिबेल्स के द्वारा। द रिबेल्स लीडर महावत खान हैड होप द स्टेज टू coup अगेंस्ट जहांगीर। तो महावत खान उसका लीडर था रिबेल का, तो उसने सोचा भाई चलो ठीक है, हम लोग फाइनली हम राजा को बंदी बना ही लिए हैं, तो अब हम coup कर चढ़ाई करते हैं। नूरजहां सरेंडर टू महावत खान। नूरजहां को इसको फाइनली सरेंडर करना पड़ा महावत खान के सामने। तो एंड सीवा हैन वाज प्लेस इन कैप्टिविटी विद हर हस्बैंड। तो उसको हस्बैंड के साथ साथ उसको जेल में डाल दिया गया। महावत खान फेल टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्ट ऑफ नूरजहां एज सून एज वाज एबल टू ऑर्गेनाइज एंड एस्केप एंड रेज एन आर्मी राइट अंडर हिज वेरी नोज। तो आसानी से भाई नूरजहां ने उसको चौंका दिया महावत खान को, और आसानी से वो एस्केप करके नूरजहां। तो इस तरह से महावत ब्रेव लीडर थी। उसके बाद महावत खान को भी एक तरह से चौंका दिया गया था। अब आते काइंड हार्टनेस, भाई सब पूरा बुरा बात कर लिया, अब काइंड हार्टनेस भी तो होगा ना। सी हैड अ काइंड हार्ट एंड परफॉर्म द मैरिज ऑफ द ऑर्फन एंड destitute गर्ल्स एट हर प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो बहुत ही जो ऑर्फन लेडी होते थे, destitute गर्ल्स होते, उसको प्राइवेट एक्सपेंसेस अपने बलबूते पे तो मैरिज करवाती थी। एक तरह से कहीं ना कहीं तुम्हारा यू विल सी मैरिजेस ऑफ ऑर्फन एंड destitute गर्ल्स एट हर प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो काइंड हार्टनेस को ये शो करता है। इंटरेस्ट इन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। I told you that she was an educated woman and had developed taste in the music, painting, and poetry. She herself composed poetry in Persians and many scholars and artists received. तो ये कहीं ना कहीं पैट्रोनेज भी कहीं ना वो देती थी किसको, तो स्कॉलर्स को, आर्टिस्ट को। सी वाज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर एंड बिल्ड द टॉम ऑफ हर फादर इतमाद उद्दौला। द टाइटल वाज गिवन टू मिर्जा गयास बेग एंड टॉम इन लाहौर कोर्ट। She was very sagacious and shrewd women who invented new kind of royal furniture, ornaments, and modes of dresses. लेकिन भाई जब शाहजहां बना फाइनली मुगल एम्पायर 1620, शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से 56 तक में। शाहजहां 1658 में बना भाई मुगल एम्पायर। तो नूरजहां was forced into confinement and she died in 1645। तो आसानी से मर गई नूरजहां 1645 में। तो हमने देखा किस तरह से नूरजहां का जो इन्फ्लुएंस रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, किस तरह से नूरजहां जहांगीर की पॉलिसी को कहीं न कहीं एक तरह से इन्फ्लुएंस करता था। इस तरह से अपना ब्रेवरी शो किया गया, इस तरह से अपना काइंड हार्टनेस भी उसके पास नहीं था, काइंड हार्टनेस नहीं था और था भी। और आर्किटेक्चर उसका बहुत बड़ा रुझान था, और साथ-साथ में पर्शियन स्कॉलर्स को भी एक तरह से पैट्रोनेज दिया, और कहीं न कहीं वो पोएट्री भी अपना मतलब कंपोज़ किया। तो नूरजहां का हम पोएट्री अगर हम बात करना चाहते हैं, तो कौन-सा भाई पोएट्री था? लेट्स ट्राई टू नो। नूरजहां पोएट्री। हाँ, नूरजहां का पोएट्री कुछ तो होगा ही ना। हुँ। एक पोएट बोलते हैं कि दो नूर जहां बी इन ए फॉर्म ऑफ वीमेन। हालांकि जो नूर जहां एक वीमेन के फॉर्म में इन द रैंक्स ऑफ मैन सी इज टाइगर्स लायर, लेकिन मैन मैन के रैंक में सी इज टाइगर्स लायर।
टाइगर स्लेयर, लायन नॉट टाइगर स्लेयर है, बाघ की हत्या करने वाले टाइगर स्लेयर। इन मैंक्स रेन सी द टाइगर स्लेयर। तो इस तरह से है। कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट था किसमें ऊपर, नूर जहां कहीं इंटरेस्ट था नूर महली ड्रेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं नूर जहां वाज वेरी मच क्रिएटिव एंड हैड गुड फैशन सेंस एंड शी इज क्रिएटेड फॉर मेनी टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड ड्रेसेस लाइक नूर महली ड्रेस एंड फाइन क्लोथ्स लाइक पंच तोलिया बदला सिल्वर ट्रेस brocades and किन्नरी silver threadlets and नूर जहां also created popularizing फर्श से चंदनी स्टाइल ऑफ सैंडलवुड कलरिंग। बहुत बड़ा स्क्रोल था। कहीं ना कहीं उस टाइम में एक तरह से इकोनॉमी में इस तरह का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इफ यू सी दैट दी, कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, नूर महली ड्रेसेस, ये सब जो है इट गोज, इट्स क्रेडिट गोज बैक टू नूर जहां। उसके बाद पंच तोलिया, ये ना विश तोलिया, विश से तोलिया, तो ये कहीं ना कहीं पंच तोलिया कुछ में होगा। तेरा पंच तोलिया ओल्ड कॉटन क्लोथ्स, मुगल क्लॉथ पंच तोलिया वाज वेरी लाइट वेट एंड यूज्ड फॉर भेल्स। अच्छा, इसको भेल के रूप में यूज किया जाता है पंच तोलिया। तो पंच तोलिया का एक तरह से बनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नूर महली ड्रेस तो था ही, ये कैसा ड्रेस है देखा, दिस इज द नूर महली ड्रेस। ठीक है, एक तरह से नूर महली ड्रेस ये नाम से ही आया है, नूर महली ड्रेस पंच तोलिया। उसके बाद हम बात करें, पंच तोलिया बदला हो गया, उसके बाद किनारी एक तरह से सिल्वर ड्रेस लेस था। उसके बाद ये सब था इसका फर्श। उसके बाद ये सैंडलवुड का भी एक तरह से पॉपुलराइज किया गया। तो ये रहा कारपेट में जो यूज किया गया है ना, मुगल कारपेट में। तो सैंडलवुड है ना, ये रहा फर्श जो ये कारपेटिंग स्टाइल है फर्श ना, वी से फर्श, फर्श में द फ्लोर। तो फर्श से चांदनी में नाम है, चांदनी मीन्स सिल्वर, चांदनी मीन्स सिल्वर कलर्ड एंड फर्श मीन्स फ्लोर। तो फ्लोर, फ्लोर पे जो बिछाने वाले जो होते हैं कारपेट ही होते हैं, और वो चांदनी कलर का, दैट्स में फर्श चांदनी से याद कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक तरह सैंडलवुड कलर्ड कारपेटिंग था, कारपेटिंग था पर चांदनी कारपेटिंग उसको बहुत यूज आता। सो टेक्सटाइल मटेरियल्स में उसका अच्छा खासा रोल है। फैशन बहुत बड़ी एक तरह से, बहुत बड़े फैशन लेडी थी एक तरह से, क्रिएटिव सेंस फैशन अच्छा था उसका। तो एस्थेटिक अपील उसके पास था, एस्थेटिक सेंस अच्छा खासा था, है ना, एस्थेटिक सेंस अच्छा। नूरजहां का टॉम है सादरा में ही है, सादरा बाग में है जो कि इसके साथ है, जहांगीर के साथ ही इसका है टॉम, लाहौर में होगा। या नूरजहां होल्डिंग गन, देखा ना किस तरह से डेयरिंग डेयरिंग लेडी है, अबुल हसन के द्वारा पेंटिंग किया गया है। नूरजहां इज होल्डिंग गन, करेक्ट, डेयरिंग लेडी, नूरजहां इज होल्डिंग गन। दिस पेंटिंग वाज का compiled, or you can say created by अबुल हसन। बहुत बड़े नामी यहाँ एक टाइम के पेंटर उस टाइम में थे। आई टोल्ड यू कि सिल्वर कॉइन्स, एक कॉइन्स कहीं ना कहीं कॉइन्स के ऊपर अपना एक तरह से नाम लिखवाया था, और बाकी कहीं ना कहीं रॉयल एडिक्ट्स ने भी इसने इशू किया था। तो यू कैन सी सिल्वर रूपी कॉइन मिंटेड अंडर जहांगीर बियरिंग द नेम नूरजहां। आई टोल्ड यू कहीं ना कहीं उसके जो सिल्वर, ये गोल्ड तो कॉइन्स नहीं थे लेकिन सिल्वर कॉइन, कॉइन्स जब इशू किए गए तो उसके ऊपर जो नाम है, भाई हम उर्दू मुझे आता तो नहीं है लेकिन नाम कहीं नहीं नूरजहां का, ये रहा नूरजहां नाम होगा। तो नूरजहां यहाँ का जो नाम है सिल्वर कॉइन्स के ऊपर हम लोग देखते हैं। एक तरह से कह सकते हैं सिल्वर रूपी कॉइन्स में नूर जहाँ का नाम है। ठीक है, तेरा शायर वेटिंग इंस्टेड वन वे फैमिली। ये रहा है पिक्चर जहांगीर एंड प्रिंस खुर्रम, यू कैन सी जहांगीर एंड प्रिंस खुर्रम। दिस इज जहांगीर एंड प्रिंस एंड दिस इज जहांगीर एंड प्रिंसेस नूर जहां। कहीं नहीं बात किया जा रहा है भाई, ये रहा खुर्रम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये रहा कंधार। हम लोग पोएट्री में बात करने वाले थे ना, पोएट्री है ना, पोएट कुछ कुछ तो लिखा ही होगा मझार पर।
The poetic express of India. Hmm. She became well versed in Arabic and Persian languages, art, literature, music, dances. The poet and author Vidyadhar Mahajan, who later praised Noor Jahan as having piercing intelligence, a volatile in temper, and sound common sense. तो एक तरह से विद्याधर महाजन ने भी एक तरह से उसको प्रेज किया, लेकिन आई वांट टू नो व्हाट आर द anyway leave it. There are Noor Jahan, Afghanistan. This is Microsoft. अब आते हैं, हम बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दारा सिको. अब आते हैं, हम बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दारा सिको. सो बेसिकली दारा सिको एक बहुत ही लिबरल एटीट्यूड और कंपैशनेट कर सकते हैं उसको. इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ. दारा सिको बहुत ही इसको सेकेंड अकबर, लिटिल अकबर के नाम से कहा जाता है. तो तुम्हारे जो लेनपुल हिस्टोरियन रहे हैं, लेनपुल जो हिस्टोरियन रहे हैं, उसने बोलते हैं भाई ये जो जहांगीर, ये जो तुम्हारा दारा सिको, उसको लिटिल अकबर के नाम से, और इसको एक और ही टाइटल्स और किया गया था अपार्ट फ्रॉम लिटिल अकबर. तो इससे क्या है कि भाई उपनिषद जो है, बहुत सारे उपनिषद को उसने ट्रांसलेट करवाए थे अंडर टाइटल सीर अकबर. ठीक है. तो सीर अकबर के टाइटल में के रूप में इसको बहुत सारे उपनिषद को, करीब 52 उपनिषद आए थे. ठीक है. इसी के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे जो संस्कृत के लिटरेचर है, भगवत महाभारत वगैरह, ये सब करवाए गए हैं. ठीक है. अगर हम बात करें और दारा सिकों के बारे में, तो दारा सिकों का जो मृत्यु हुआ बहुत ही बुरा तरह से हुआ है. ठीक है. दारा सिकों का कहते हैं कि उनकी जो सिर है, सिर वो काट करके शाहजहां के पास भेज दिया गया, जब शाहजहां उस टाइम में बेसिकली जेल में बंद थे. और उसका जो 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 होते हैं, जो सिर से जो नीचे लोग पार करते हैं, उनको उनके सारे पार्ट को वो कहाँ की हिमालय की जो टॉम है वहां पे उसको दफनाया गया. तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही बुरा मौत दिया गया. कहीं के दावा से को बेटर भ्रमण वगैरह में एक तरह से ठीक है, लड़े थे बेटर भ्रमण. हाँ, तो हरमत जो मन प्रदेश में है वो ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था.
शाहजहां के थ्रोन के लिए किसी हुआ था। तो इसमें यह है कि दारा सिकों को सपोर्ट किया गया, राजा दुश्मन से वाला सपोर्ट किया गया था, और औरंगजेब को सपोर्ट किया गया था जिस प्रिंस मुराद का, क्योंकि मुराद और दारा सिकों के, मुराद जो है बहुत ही एक तरह से औरंगजेब को बहुत प्रिय थे। औरंगजेब वाज लविंग द प्रिंस मुराद, और दारा सिकों को सपोर्ट किया था राजा दुश्मन ने। तो इस तरह से मतलब औरंगजेब फाइनली विक्ट्री हुआ था, औरंगजेब को विक्ट्री मिल गया था। तो इस तरह से धर्मत की लड़ाई हुई है। फिर तो मैंने बताया कि हाँ उसका जो हेड है उसको शाहजहां के पास, शाहजहां उस टाइम में आगरा में बंदी थे, तो उसको आगरा में उसको उसका हेड जो दारा सिकों का भेज दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था शाहजहां दारा सिकों का, तो उसका हेड आगरा में भेज दिया गया, और वही उसको कैंपस जो है गालवान में उसको बरी कर दिया गया। और दारा सिकों का जो टोर्सो जैसे बताया कि जो सर से नीचे का पार्ट उसको माई टोम में जो दली में उसको क्या कहते हैं, बरी कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत ही बुरे मौत मारे गए इसको, दारा सिकों को। उसी तरह दारा सिकों के जो बेटे थे उसका नाम है प्रिंस सुलेमान सिको। तो भाई वो भी हार गया था बैटल ऑफ सक्सेना में। तो वो भाई क्या कि सेल्टर ले लिया कहाँ पे, श्रीनगर, लेकिन श्रीनगर में एक राजा हुआ करता था मेदिनी सिंह। तो मेदिनी सिंह जो कि हमारा पृथ्वी सिंह का किंगडम से बिलोंग करता था। तो जैसे ही दारा सिकों के जो बेटे हैं तुम्हारा क्या नाम है, प्रिंस सुलेमान सिको, वो जब गए भाई, जब हार गए थे औरंगजेब से, नवाब ऑफ सक्सेसफुल वो चले गए श्रीनगर। तो श्रीनगर में एक किंगडम हुआ करता था पृथ्वी सिंह का, उसी उसी पृथ्वी सिंह का सक्सेसर कोई था, तो उसका नाम था मेदिनी सिंह। उसने क्या किया कि भाई वो हैंडेड कर दिया, उसने धोखा दे दिया किसको, प्रिंस सुलेमान को उसने हैंड कर दिया, किसको हैंडेड हिम ओवर टू किसको, बंदे को। ही वाज इम्प्रिजन इन ग्वालियर फोर्ट। तो उस तरह से सुलेमान जो है प्रिंस सुलेमान, उसको ग्वालियर फोर्ट उसको इम्प्रिजन कर दिया गया until by giving an excessive dose of opium। भाई उसको खूब खूब ओपियम पिलाया गया, उसको ओपियम दिया गया, जिसको प्रिंस सुलेमान को दारा सिकों के बेटे थे, उसको खाली मर गया। तो इस तरह से दारा सिकों बस यही होता है, लिबरल लिबरल होने के बाद इस तरह से मारा गया, ये बहुत ही गलत बात है। तो प्रिंस सुलेमान की तरह से मतलब जो दारा सिकों के बेटे उसको मार दिया गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि सीर अकबर कई 52 उपनिषद जो ट्रांसलेट किए गए इसके, है ना। और लिनकुल जो इतिहासकार बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं, उसमें बोलते भाई ये इसको लिटिल अकबर का संज्ञा दिया गया। क्योंकि उसका जो टॉलरेंस एटीट्यूड हुआ करता था, और बहुत ही जनरस काइंड का था, जनरस नेचर का आदमी था, इसलिए उसको लिटिल अकबर। और दारा सिकों का एक अच्छा, एक बहुत तरह से एक अच्छा जो कि कृति है, मजमा उल बहरैन। तो बहुत ही मुझे सबसे अच्छे नाम लगते हैं मजमा उल बहरैन। इट इज लाइक ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दारा सिको। दारा सिको गेव हिम दैट। तो ये हुआ एक ओरिजिनल उसका क्रिएशन अपने आप में खुद एक तरह से मजमा उल बहरैन, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो एक तरह से इसको एक और टाइटल उसका नाम है, शाहजहां ने एक भी एक और टाइटल दिया था उसको, बोला भाई शाह बुलंद इकबाल। आप इकबाल क्यों भी, क्योंकि इकबाल जो है इस तरह से पोएटिक नेचर शो कर रहा है ना इकबाल, उसको नाम दिया कि शाह बुलंद इकबाल। इसको तो दारा शाहजहां ने नाम दिया, इसको दारा सिकों को दिया, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अब दारा सिकों में बात करते हैं कि मतलब राइट स्पॉट ऐसे हो तारा सिको। तारा सिको में हमने इससे बात की है किस तरह से अच्छे मिजाज के इंसान थे तारा सिको, ठीक है। 52 प्रतिशत को भाई ट्रांसलेट करवाना अपने कार्यकाल में तो आसानी बात नहीं है। तो और दारा सिको के बारे में ये कहा जाता है कि पहले इसके मुस्लिम हुए कि हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टडी के बारे की रूप, ठीक है। और जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कोई पढ़े हो, उसी के टाइम में वो योग वशिष्ठ भी ट्रांसलेट हुए हैं। भागवत गीता जो मैंने बताया पर्शियन लैंग्वेज में, तो भागवत गीता योग वशिष्ठ जो अच्छे किताब रहे उस टाइम उसको ट्रांसलेट करवाया गया। हालांकि यूपीएससी भी ने पूछा योग वशिष्ठ क्या था, किसी टाइम में था, तो ये हम बात है। तो हम इतने बारे में बात के आगे देखते हैं। दारा सिको was the eldest son of Shahjahan, okay, and was most favored nominee for the throne. He received the title Shah Buland Iqbal from Shahjahan। I told you शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल के टाइटल जो मिला है दारा सिको को मिला है, वो शाह बुलंद इकबाल। He contested but lost the throne of Mughal Empire to Aurangzeb। He was executed by the Aurangzeb in 1659 on the charges of heresy। यही तो चार्ज लगाया गया, हेरेसी के चार्ज लगाया गया। Dara is known for his liberal views and interest in the Pathisms, especially in the Vedanta stream। I told you because उपनिषद को बहुत बड़ी तरह से वो
तरह से उसको पसंद था, तो इसलिए वेदांता स्ट्रीम में पैंथिज्म में उसके उसका अपना रुचि था, है ना। पैंथिज्म जो सारे धर्मों को, पैन मतलब होता है कि पूरा ऑल, होल, जैसे पैंडेमिक इस तरह पैन, पैन सारे जो थीज्म है, थीस्टिक एस्पेक्ट्स है, सारे धर्मों को निचोड़ है, उसको एक तरह से उसको मानता था। और वेदांता फाइनली बिलीव करता, वेदांता आइडियोलॉजी में, वेदांता फिलोसफिकल जो नॉन डुअलिज्म होते हैं, तो उसी में ही रॉट डिटेल बुक्स इंटाइटल मजमा उल बहरे, आई टोल्ड यू, इसका मतलब होता है मिंगलिंग ऑफ टू ओशियंस। मजमा उल बहरे का मतलब होता है कि दो ओशियंस को मिलाना। when he compared the Islamic Sufi concept with those of Hindu mysticism, तो उस तरह से हिंदू सूफी कंसेप्ट को उसने मिलाया है, किससे कंपेयर किया है, हिंदू मिस्टिज्म से, एंड केम टू फॉर दिस कंक्लूजन दैट दे वर आइडेंटिकल। क्योंकि ऑब्वियसली तुम नॉन डुअलिज्म में क्या बात करते हो, तो वेदांत में एक ही बात है, एक ही बात करते हो ना, आप बात करते हो क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो बोला ब्रह्म एक ही है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई यू सी, आफ्टर स्टडीइंग द सूफी concept and Sufi concept and Hindu mysticism, he found that there is only one thing, there is only one aspect of God. So he also took keen interest in Upanishad. He got period to Upanishad translated Upanishad. I told you Sir Akbar के नाम से, सिर अकबर का मतलब द सीक्रेट अकबर, ये अच्छी बात है। ग्रेट सीक्रेट के सिर अकबर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ग्रेट सीक्रेट। तो उसने शाहजहां, ये जो तो दारा सिक्को था उसके टाइम में तुम्हारा हुआ है ये, इसके उसके ट्रांसलेट किया इसके नाम से। Dara was devotee of Qadri order of Sufism, was a disciple of मियां मीर। तो दारा सिंह की अगर हम बात करें तो वो मियां मीर के डिसिपल्स रहे हैं। और कादरी होता है जो सूफीज्म के कादरी होते हैं, बहुत सारे सूफी का ऑर्डर, चिश्ती है, नक्शबंदी है ना। उसके बाद हमारा अ, फिरदौसी सिलसिला जो बिहार में पटना में बहुत फेमस रहा है ना। तो उस तरह से कादरी एक ऑर्डर है, उसको एक तरह से डिवोटी थे दारा सिंह को। तो और वो मियाँ मीर के भी डिसिपल्स रहे हैं, हालांकि उसका सक्सेसर है मुलिया साहब बदरची। मियाँ मीर का सक्सेसर हुआ करता है, उसका नाम था मुल्ला साहब बदरची। कादरी orders reflects liberal and syncretic tendencies Islamic influence। तो कहीं ना कहीं कादरी उस टाइम में जो दारा सिकों का जो टाइम था, टाइम टेबल आई टोल्ड यू 1658 के बाद ही होगा, 1650 के आसपास यू कैन से, बिकॉज इसमें टाइम पीरियड क्या है, 1659 एग्जीक्यूटेड किया, इसका मतलब 1650 के आसपास टाइम पीरियड है दारा सिकों का। दारा सिकों के टाइम में एक तरह से कादरी ऑर्डर सूफीज्म, उस टाइम में सूफीज्म था। तो दारा सिकों का अदर फेमस वर्क्स वे सफीनत अल उलिया, ये अच्छा नाम है, सफीनत अल उलिया, औलिया। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया जिस तरह से नाम, उसी तरह उसका नाम है सफीनत अल औलिया, बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट। उसका बाद दूसरा वर्क है सकीनत अल उलिया, सकीनत अल उलिया बायोग्राफीज ऑफ दारा दारा, टू प्रिसेप्टर्स मियां मीर मुलिया सा, हसनत अल उर्फीन, कंटेंस दारा रिलीजियस आइडियाज, हसनत अल उर्फीन, अल अरफीन। तो कहीं कहीं एक तरह से बहुत सारे यू विल फाइंड दैट, बहुत सारे जो कृतियां हैं, बहुत सारे जो वर्क्स हैं दार्शनिकों के द्वारा लिखा गया। फाइनली वी विल सी, apart from that you will also see, apart from the two books like Hasnat al-Urfin and Hasnat al-Urfin, उसके बाद तुम्हारा हो गया सकीनत अल औलिया, सफीनत अल औलिया, ठीक है। हसनत अल-उर्फीन, उसके बाद तुम्हारा हो गया सकीनत अल औलिया, सफीनत। Many scholars believe that the course of Mughal history in the latter half of the 17th century could have been totally different had Dara Sikh standard thrown instead of। अब बात है कि अगर दारा सिको बैठ जाते गद्दी के ऊपर और अंग्रेज के ऊपर थे, तो क्या होता, मतलब भारत के इतिहास स्वर्णिम, आई वुड से। तो हिस्टोरियन से ए आर श्रीवास्तव बोलते हैं कि ये शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगलिया सल्तनत था। मुगल सल्तनत के टाइम पीरियड का सबसे गोल्डन पीरियड किसका था, शाहजहां का था, एज पर डॉक्टर ए आर श्रीवास्तव। अगर दारा सिंह को आते हैं गद्दी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि दारा सिंह, शाहजहां के जो टाइम पीरियड था ये गोल्डन पीरियड, मुझे लगता है कि लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड होता, तो दारा सिंह को क्रेडिट जाता। तो मुझे लगता है लिटरेचर का गोल्डन पीरियड है, अगर है, खासकर हिंदू लिटरेचर का तो क्या ही होगा, सूफी का भी अच्छा किया है, लेकिन दारा सिकों का बहुत बड़ा उसका रोल है, लेकिन उसको उतना से, क्योंकि ही कुड नॉट बिकम अ रूलर, he was just pursuing his interest, what and his influences created by the Sufi,
this supremacistic orders. He was doing this thing, but he could not become ruler. Despite he could not become rulers, we celebrate his creations of literatures. We celebrate his, and we acknowledge his contribution towards Indian history. But perhaps he could become rulers then. The the courses of history could have changed. अब आते हैं राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन मुगल्स एंड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब आते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो किस तरह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आए हैं और मुगल्स का क्या रोल है उस टाइम, मुगल कैसे उस तरह से मतलब आ, उसको टैकल किए हैं और किस तरह उसको व्यवहार ट्रीट किया है, किस तरह उसको आस्थान दिया है। तो पहली बात आता है विलियम हॉकिंस के बाद। पहली बार विलियम हॉकिंस एलिजाबेथ के द्वारा भेजा जाता है, भाई आप जाइए आगे के साथ उसको एक तरह से आप ही करिए इसको, उसको कुछ खिलाइए पिलाइए उसको अच्छा से, एक तरह से बोलिए भाई हमको शुरुआत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दे दो। तो पहले ऑर्डर शाहजहां ने दिया भी था, लेकिन जब सर थॉमस रॉ जो जेम्स फर्स्ट के द्वारा एम्बेसडर जो है, जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर सर थॉमस उसको द्वारा भेजा था है सर थॉमस रॉ को, वो फाइनली एबल टू सक्सीड। तो फाइनली उसके द्वारा मतलब एक तरह से लिया गया। तो बहुत ही अच्छे तरह से जहांगीर के टाइम ये लोग आए थे। बाकी तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, जैसे रैल्फ फिच आए हैं अकबर के टाइम में है, जेसुइट मिशनरी आई टोल्ड यू, एंटोनियो फादर एंटोनियो मोसेराट, ये सब भी आए थे है ना, बहुत सारे आए थे, तो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे। दूसरी तरफ बात है कि ये पूरा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, तो ये अगर हम बात करें तो पोर्तुगीज कब आए हैं, पोर्तुगीज हालांकि बहुत पहले आ गए थे विजयनगर टाइम के पीरियड में आसपास। तो लेकिन डच वगैरह भी आए थे, तो ये सब ब्रिटिश आए थे, तो इस तरह से खासकर उसका रोल है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग कंपनीज का रोल रहा है Mughal Sultanate time. Mughals and the Indian rulers were interested in the development of India's overseas trade. They wanted it as a, it would have increased their revenue resources because उसका चाहते भाई ऐसा है कि भाई मुगलिया दिल्ली में, मुगलिया इंडिया में, मुगल इंडिया में एक तरह से बहुत ही रिसोर्सेस हैं भाई। क्योंकि उस टाइम में जब मुगल सल्तनत हुआ करता था तो बहुत ही फेम बहुत होता, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेम उसका हुआ करता था। तो what they wanted it as a, it would have increased their revenue resources. Therefore, in spite of all odds, the Mughal emperor had and the local Indian rulers in general welcome foreign merchants। मतलब भाई ठीक है, क्योंकि हमारे देश में शुरू से ये परंपरा रहा है आतिथ्य देवो भव। तो भाई कोई भी बाहर से आता है तो we will treat them as a guest, not just as a guest but as a god। However, the Mughals and other Indian rulers were weak on the seas। हाँ ये तो बात है, क्योंकि चूंकि अकबर ने कुछ खास कर नहीं पाया, शिप्स के मामले उतना भी नहीं कर पाया। बाकी रूलर जो है तो उसने उसका रोल ही नहीं था कि शिप्स को कुछ करे, हम बनाए सी के ऊपर, हम लोगों को उसने लैंड में खास के ज्यादा काम किया, सी के ऊपर काम नहीं किया। To ensure smooth sailing of the Indian ships, it was necessary for them to align with one or two powerful European power who were master of the sea. Yes, the Europeans were master of sea, no doubt. So long as Mughals were strong, the European merchants followed the policy of seeking concessions through petitions and presents. So they were trying to influence the Mughal rulers by giving petitions and presents. So companies also combined trade and diplomacy with war and control of territory where their factories were situated. तो क्या हुआ किस तरह से विद द बिगिनिंग ऑफ मुगल पावर द यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड इम्पोजिंग दिस देयर विल ऑन द इंडियन रूलर्स टू गेट मोनोपोलीज एंड कंसेशन। जैसे ही मुगल सल्तनत जो कम हो रहा था, धीरे पड़ रहा था, तो फाइनली दे वर व्हाट एबल टू डू, दे वर एबल टू सीकिंग व्हाट इज कॉल्ड द monopolies and concessions। they also took full advantage of the internal conflicts। डच आए, डच के बारे में बात करें हम, अगर हम बात करें डच के बारे में, डच गॉट a favorable response from the rulers of Golconda। तो गोलकंडा के, मैंने एक बार बता दें, गोलकंडा में क्या हुआ था कि कोहिनूर का जो डायमंड है उसका माइंस गोलकंडा में हुआ है। अगर हम बात करें डच के बारे में, तो हम बात करेंगे तो जो गोलकंडा के रूलर्स हुआ करते थे
ये उससे अच्छा खासा उसको डिस्काउंट मिला था उसको। गोलकंडा को रूरल्स ने कंसेशन भी उसको दिए थे, तब एग्जामिशन ट्रेड आप ट्रेड में एग्जाम से सब ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। She featured a company relations with Indian rulers with that, in spite of getting concessions from the Indian rulers, the local officials constantly use their power to evade their orders and impose duties on companies trade. भाई आप कितना भी कंसेशन ले ली कोई दिक्कत नहीं, I will impose duties on companies trade. We frequently rejected classes in local officers. तो डच जैसे आए थे गोलकंडा के बगानों में, तो कहीं नहीं तो भाई आपने इम्पेरर हो, भले आपने परमिशन उसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आई एम द लोकल ऑफिसर, आई विल नॉट लेट दिस थिंग हैपन, आई विल नॉट गिव यू सो मच क्रेडिट, आई विल नॉट गिव यू कंसेशन any तो impose duties on the company ship। डच को भी कहीं ना कहीं जहांगीर से फरमान मिल गया, फरमान मिल गया जहांगीर से। तो जहांगीर ने फरमान दिया भैया आपको क्या हो कि बुरहानपुर में आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, बुरहानपुर से लेकर कैंपे तक और अहमदाबाद में आपको कोई ठोस बनाना पड़ेगा, मतलब आप आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो लगता है भाई बुरहानपुर से लेकर कैंपे और हैदराबाद अहमदाबाद में आपको कोई टोल वगैरह जमाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से शाहजहां also issued to Farman granting them permission to take over। शाहजहां ने भाई भाई बोला कि आई आप बंगाल में आप करिए कोई ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहां ने भी उसको ऑर्डर दिया भैया आप बंगाल में ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं है, और आप सूरत में ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं। शाहजहां का जो ऑर्डर है 1635 के आसपास है, और 1638 में क्या होता है, कंपनी गॉट अनदर फ्रॉम शाहजहां ट्रेड शाहजहां के द्वारा बहुत अच्छा खासा उसको कंसेशन मिलता है। सॉल्ट पीटर का भी उसको मिलता है भाई, अब सॉल्ट कहीं ना कहीं मुझे शाहजहां के भाई में था कि भाई कहीं ना कहीं उसको ट्रेडिंग में उसको इंटरेस्ट था भी नहीं था, लेकिन उसको ताजमहल वगैरह बनवाना था तो भाई उसको पैसा चाहिए ना, कहीं ना पैसा वगैरह मिलता होगा, कहीं का रेवेन्यू वगैरह मिलता ही होगा, कहीं का छूट होता होगा ब्रिटिश को कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं भाई कोई दिक्कत है, आप ट्रेड करिए सॉल्ट पीटर में। आई एम आल्सो गिविंग यू एग्जाम्पशंस फ्रॉम पेमेंट। 1642 आता है, शाहजहां exempted Dutch from the payment of transit duties along the Pipli Agra route। तो डच को भी तो डच एक टाइम में बहुत अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गए, क्यों, बिकॉज देयर वर सो मेनी एग्जाम्स गिवन बाय रूलर्स लाइक बुरहानपुर से कैंपे, फिर अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद में आपको मिल गया भाई, डच को मिल गया एग्जाम्पशंस, फिर शाहजहां ने साउथ ब्रिटेन में उसको एग्जाम्पशन दे दिया भाई, बंगाल में भी एग्जाम्पशन दे दिया। फिर अब आते हैं पिपली आगरा आगरा पिपली, और पिपली से लेकर आगरा रूट में उसको आप पेमेंट ट्रांजिट ड्यूटी जो पे करना होता है उसको एग्जाम्पशन कर दी। तो इतने सारे एग्जाम्पशन मिलने का ऑब्वियसली डच तो क्रेडिट करेगा। एक टाइम था कि डच और डच जो है जो ब्रिटिश कंपनी उसको टक्कर दिया करता था। 1642 के आसपास के औरंगजेब ने क्या किया, जितने सारे जो शाहजहां के द्वारा दिए गए थे फरमान और प्रिविलेज उसको सारे कंफर्म कर दिया भाई, ठीक कोई दिक्कत नहीं, आप दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होगा। औरंगजेब ने वही फरमान को 1689 के आसपास में औरंगजेब ने और कंसेशन दिया उसको। औरंगजेब ने भी बोला कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर कोलकाता में रहना पसंद है, बच को बोला कि भाई अगर आपको कोलकाता में रहना पसंद है और अगर आपको चाहिए कंसेशन तो आइए, हम भी तो आपको तुमको देते कंसेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो औरंगजेब ने क्या किया कि भाई उसको कोलकाता में एक तरह से कंसेशन दे दिया, भाई ठीक है आप ले लो कोई दिक्कत नहीं, कोलकाता में काम करो कोई दिक्कत नहीं। तो गोलकंडा जो कि ऑक्युपाई कर लिया गया था मुगल द्वारा, खासकर औरंगजेब के द्वारा, उसने उसको आसानी से छूट दे दिया भाई, कोई दिक्कत ना, उसे काम करे कोई दिक्कत नहीं। तो सालन इवन सालन पे जो आया था बाद में 1709 में, तो उसने भी क्या किया तो कस्टम ड्यूटी जो था स्वाद एंड हुगली में कम कर दिया सालन में। उसने भी क्या किया कि भाई कंपनी जो था उसको एग्जाम कर दिया, किससे, फ्रॉम पेइंग ट्रांजिट ड्यू थ्रू द मुगल एम्पायर। भाई साल हमने बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, पूरे मुगल या सल्तनत मुगल एम्पायर में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, का पे नहीं करना पड़ेगा। उसको बोला तो कंपनी को बोला गया।
लेकिन क्या हुआ था कि लोकल ऑफिसर्स का जो हिंड्रेंसेस था उसके द्वारा डच फैक्टर्स समटाइम्स कुड नॉट एबल द बहादुरी एकदम से, तो डच एकदम से नहीं एंजॉय कर पाए क्योंकि वो लोकल ऑफिसर्स का इतना दबदबा, तो राहदारी भी अगेंस्ट मना करता था, डच को कुछ वो नहीं कर पाए। Similarly, to apply the local officers, they have to spend handsome money. मुझे आपको भी करना भैया, ठीक है, 100 टका दूंगी, 100 टका, 1000 टका ले लीजिए, लेकिन मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे परेशान मत करिए। इस तरह से कहीं ना कहीं डच ने भी इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया, लोकल ऑफिसर से मानने वाले तैयार थे नहीं, तो फाइनली कंपनी ने क्या किया, अपना मिसयूज करना शुरू कर दिया अपना प्रिविलेज का, तो ड्यूटी फ्री गुड्स मिलने का उसको प्रिविलेज था उसको मिसयूज करने लगा। तो क्या किया, मिसयूज कैसे किया भैया, इंडियन मर्चेंट को हेल्प करना शुरू कर दिया, कस्टम्स हुली में जो कस्टम लगता है उसमें इंडियन मर्चेंट को हेल्प करना शुरू किया। पहली बात क्या होता है, हुली में इंडियन मर्चेंट को कस्टम देना पे करना होता था, तो क्या किया डच में, क्या किया कि इंडियन मर्चेंट को कस्टम्स नहीं देना पड़े, इंडियन मर्चेंट उसका भी उसको हायर करने लगा, उसके ऑब्जेक्ट्स को गुड्स को, तो आसानी से उसको ट्रांजिट होने देते। हाँ, तो 1712 ईस्वी क्या जहांगीर शाह ने भी कंफर्म ऑल प्रिविलेजेस मराठी पर औरंगजेब को था, जहांगीर शाह ने भी औरंगजेब के द्वारा कंफर्म कर दिया कि भाई जो भी औरंगजेब जो भी उसको देता था प्रिविलेज, तो जहांगीर शाह में उसको एडी कर लिया गया। लेकिन वही लोकल ऑफिसर्स, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ब्रोक आउट एट पल्लाकट्टू एंड दरकसवरम, पल्लाकट्टू एंड दरकछावरम in 1725-30, and the Dutch factory was attacked and plundered. Finally, 1925-30 का आसपास क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ किसके बीच में, पल्लाकट्टू एंड द्रक्षावरम, है ना। तो डच फैक्ट्री वाज अटैक एंड प्लंडर। अब आते हैं इंग्लिश में, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो was during the Jahangir reign that the first English envoy reached the Mughal court and इसी को welcome on in the 1677 Jahangir time, मतलब I told you in 1688 where English established their first factory in Surat। पहली बात तो सूरत में establish हुआ फैक्ट्री का सूरत हाट में। Captain Hawkins was sent to Jahangir court for securing trade concerning the session। जहांगीर शुरुआत में इसको वेलकम किया गया इंग्लिश इनवाय को एंड मनसब्स ऑफ 400 यार्ड वेस्टवर्ड ऑन हिम। जहांगीर ने भाई बोला ठीक है भैया, आप आए हैं हमारे द्वार में खाली हाथ, तो कैसे आप खाली हाथ बैठे मिलेंगे, तो आपको हम 400 चार्ट का आपको मनसब बना देते हैं। इसको बोला, हॉकिंस को बोला। चलो सितारा में हॉकिंस हमसे मिला उसको ट्रेड करने का सूरत में, लेकिन पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस होने के कारण क्या हुआ कि उसको एक्सपेल कर दिया, भाई आप भागो यहाँ से। तो पोर्तुगीज का एक्सपेल आ गया उस टाइम में, तो 1611 आसपास तो ट्रेड होने लगा, लेकिन प्रॉब्लम तो हुआ कि अटैक किया, तो भाई हालांकि इसको आगरा से लगा दिया गया। तो पहले पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल हुआ कहाँ पे हुआ, स्वात में हुआ। स्वात में वैली होता है, वही स्वात में हुआ। बाद में कैप्टन बेस्ट को भी सब्सिडी मिल गया, फैक्ट्री ओपन कर लीजिए स्वाद को, स्वाद में कैम्बे में, अहमदाबाद में होगा होगा में। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे एक तरह से मिल गया है, बहुत सारे उसी तरह है, फ्रेंड्स भी आए हैं, एक तरह से बहुत लोग आए हैं। 1615 में थॉमस वो आया, भाभी के दरबार में, उसको भी वही रख दीजिएगा। ऑनलाइन तो पहले 1615 ईस्वी में क्या हुआ, मसरूर उसको जहांगीर दरबार भेजा गया, तो भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ था कि दर्ज परेशान कर रहा है, जब लोग परेशान कर रहा है, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, तो इसमें क्या हुआ कि
तो उसने फाइनली उसने देखा कि भाई इंडियन रूलर्स के पास कोई वीकनेस है, इसके पास क्या है कि नेवल केस है, तो उसके पास प्रॉब्लम है। इसने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स को सिर्फ को हरास करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि अनदर फरमान जारी जारी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश मर्चेंट्स को एक आसानी से ट्रेड एक प्रिविलेज मिले भाई, राइट टू ओपन फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो देखा इंडियन रूलर्स परेशान कर रहा है भाई, उसके बाद नेवल वीकनेस और हम परेशान कर रहे हैं, हम भी परेशान कैसे कोई कर सकता है, हम भी परेशान करते हैं। तो खाली इसको क्या कि इंडियन जो रूलर्स थे उसको साथ बोला भाई आप जहाँ आपको मन है ट्रेड करने का, आप पूरा अपना प्रैक्टिस करने का आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश सक्सेस तक होने के बाद क्या हुआ, इंग्लिश पोर्टुगीज में कन्फ्लिक्ट होना लगा 1630 से लेकर 34 में जो एडवांटेज ऑफ इंग्लिश। आफ्टर दैट पोर्टुगीज ग्रेजुअली लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर इंडियन पोजीशन एक्सपेक्ट गोवा गवर्नमेंट। इसके बाद जैसे ही इंडियन भाई भाई टिट फॉर टैट, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है उसके बाद नेवर वीकनेस देयर। So what I would try to pressurize the Indian rulers. I will try to get favors in opening all the factories across India. What it led to the establishment of full-fledged English hegemony. तो फाइनली ये इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, फाइनली पोर्टुगीज हार जाते हैं और पोर्टुगीज बस गोवा दमन और दीव तक सीमित रहना है। 1662 ईस्वी क्या हुआ, दे गेव एन आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स टू ऑफ यूनाइटेड नेशन। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है 1662 में क्या हुआ कि पोर्टुगीज जो क्या करते हैं, अपना जो बॉम्बे जो आइलैंड उसको चार्ल्स टू को देते हैं इन डॉरी। जब क्या हुआ कि इंग्लिश कंपनी ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया सूरत के चारों ओर, तो उसको इम्प्रिजन बना लिया गया मुगल ऑफिसर के द्वारा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं शाहजहां के बेटे थे, उसने भी एक तरह से निशान किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई आप ट्रेड करेंगे कोई दिक्कत नहीं बंगाल में। तो उसी निशान के द्वारा क्या हुआ, ट्रेडिंग प्रिविलेज शुरू हो गया। शाइस्ता खान के द्वारा भी इसको लेकिन अगर हम औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ कि देयर वाज चेंजेस इन मुगल और इंग्लिश, मुगल और इंग्लिश कंपनी की जो रिलेशन है उसका चेंजेस हुआ। उस टाइम में क्या चेंजेस हुआ हम देखेंगे कि इस टाइम में क्या हुआ कि जो इंग्लिश का जो फोर्टिफिकेशन, इंग्लिश कंपनी ने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया अपने सेटलमेंट का मद्रास में और बॉम्बे के आसपास, ठीक है। तो औरंगजेब was busy in a Deccan campaign, ठीक है। उस टाइम में औरंगजेब बिजी था डेक्कन कैंपेन में। उसने फोर्स को यूज किया गया और डिक्टेट का प्राइस को डिक्टेट करा कि भाई आई रिक्वायर फ्री हैंड, आई विल आल्सो रिक्वायर हैंड फ्री हैंड ट्रायल। इंग्लिश ये सब जो प्रॉब्लम हुआ 1686 में वार अगेंस्ट, इंग्लिश ने डिक्लेयर कर दिया वार अगेंस्ट मुगल एम्पायर ने, सैक कुली कुली में पहली बात को सैक किया या खत्म करने की कोशिश की कुली। और they were highly mistaken in assessing the Mughal mind. Unlike their counterparts in South India, Mughals were not more than matched to small trading companies. आसानी से मुगल हारा उस टाइम अच्छा खासा था, रिजल्ट इन द लेटेस्ट रिवोल्यूशन। पहली हार गया इंग्लिश। पुलिस को अपना पोजीशन लूज करना पड़ा बंगाल में। देयर फैक्ट्री सूरत मसूलीपट्टनम विशाखापट्टनम वेयर सीज एंड देयर फोर्ट एट बॉम्बे वाज डिसीज। Realizing the Mughal might they again went back to their old policy of petition and diplomacy, भाई फिर डिप्लोमेसी करने लगा, petition करने, भाई आप मुझे आप छोड़ दी, कोई दिक्कत है भाई, मुगल को टक्कर दिया इसने इंग्लिश में, तो बोला भाई ऐसा है कि छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है, हम petition और डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, आई विल नॉट फाइट विद यू। They again turned humble prisoners and agreed to trade on the protection of Indian rulers. Soon Mughal pardoned them, considering the advantage of increasing foreign trade. Aurangzeb granted them permission to trade on payment of 1,50,000 as compensation. भाई 1,50,000 रुपया अगर दोगे तभी हमको ट्रेडिंग करने का मंजूर देंगे। तो इंग्लिश ने भी क्या किया, सक्सीडेड गेटिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम ग्रांड कस्टम ड्यूटी भगवान ऑर्डर कर दिए। तो एक इंग्लिश ने किंग था, उसका नाम था उसको, उसने अपना एम्बेसडर को भेजा, उसका नाम सर विलियम मॉरिस। औरंगजेब के कोर्ट में आया था सर विलियम मॉरिस ने, उसने क्या किया, फॉर्मल ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन एंड राइट टू एक्सरसाइज फुल इंग्लिश सोल्यूशन ओवर। उसने बोला जितने सारे इंग्लिश सेटलमेंट, उसने बोला भाई आप सारी जगह में छूट कर देंगे। उसने फाइनली सरमन के टाइम में एक अनदर मिशन सेंड किया गया और फरमान फारुखसियार से शुरू ले लिया गया।
और उससे आप कमान बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरमन जो था इंग्लिश मर्चेंट था, इंग्लिश मतलब था उसकी तरफ से, वो गया भाई फारूक के पास गया, बोला भाई ऐसा है कि आप हमको छोड़ दीजिए फ्रॉम पेइंग कस्टम ड्यूटी टू गुजरात एंड डेक्कन एज वेल। Bengal school Murshed Ali Khan and Ali Vardi Khan remained on the scene. They strictly checked the corruption and opposition privilege not to control. बंगाल में मुर्शिद अली खान वगैरह से पर्सनैलिटी थी, उसमें इंग्लिश इंग्लिश को कुछ आसानी से मतलब बेनिफिट लेने नहीं दिया, बट इमीडिएटली आफ्टर द डिपार्चर द कंपनी गॉट अपॉर्चुनिटी टू ठीक है। जैसे ही मुर्शिद अली खान वगैरह को चले बसे, तो उसके बाद आराम से कंपनी ने क्या किया, अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंग्लिश का डंच ने इस समय अच्छा से क्या किया उसको, मतलब एक तरह से उसी तरह फ्रेंच भी आए, फ्रेंच ने वही किया भाई। फ्रेंच पहली बार मराठा शिवाजी का सामना करना पड़ा उसको 1677 में। फ्रेंच कमांडर थे, उसका मार्टिन उसका नाम था, उसने एक्नॉलेज शिवाजी की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट किया और एग्री टू पे अमाउंट रिव्यू लाइसेंस टू ट्रेड इन रोमानिया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अमाउंट दे, आप लाइसेंस दे दीजिएगा भाई। तो फ्रेंच का टक्कर जो हुआ बेसिकली शिवाजी के साथ टक्कर हुआ था कि भाई जो मराठा का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। उसने बोला भाई ठीक है, कोई मार्टिन जो उसका डायरेक्टर था, फ्रेंच डायरेक्टर था, उसने बोला भाई ठीक है, और शिवाजी को मतलब भाई आपको हम अमाउंट पेमेंट करते हैं, आप हमको लाइसेंस करने दे दीजिए, ठीक है। 1680 में फ्रेंच गॉट परमिशन टू 45 पॉन्डिचेरी फ्रॉम फ्रॉम बाबाजी। बाबाजी से परमिशन मिल गया उसको, फ्रेंच को। बाबाजी के मराठा लीडर्स थे उस टाइम, उसको परमिशन मिल गया। फ्रेंच आल्सो सक्सेस इन गेटिंग फरमान फ्रॉम औरंगजेब को मिल गया, औरंगजेब से दिया गया। सूरत में शक्ति स्टैब्लिश कर लिया फ्रेंच में, और औरंगजेब ने चंदननगर विलेज फ्रेंच को दे दिया था। French maintained close ties with those early Nawab Carnatic के इस अथवा Carnatic War शुरू हो गया। On the basis strong recommendation by him, the Mughal Emperor Muhammad Shah issued a command giving granting permission to French। और फ्रेंच से को परमिशन देने वाला एक था रूलर, उसका नाम था मोहम्मद शाह। बोला भैया आप इस गोल्ड और सिल्वर करेंसी को आप इशू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, और स्टाम्प जो है मुगल एम्परर का स्टाम्प होगा, एंड नेम ऑफ प्लेस 19 को भी प्लेस करेंगे। चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन साउथ प्रोवाइडेड फ्रेंच विद अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ। जैसे ही पॉलिटिकल चेंज हुआ, उस सिचुएशन से मतलब इंटरफेयर करना शुरू हुआ। अब यहाँ से होता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल्स हुआ, उसी तरह कार्नेटिक वार होता है, ढेर सारा होता है वार होता है। तो हालांकि बाद में क्या हुआ, इंटरफेयर भी करने लगा चंदा साहिब। जो सन लॉ ऑफ दोस्त अली था, तो दोस्त अली ने परमिशन दिया था इसको। नवाब क्लोज तो नवाब दोस्त अली जो था नवाब का, उसको अच्छा खासा फ्रेंच का संबंध था। लेकिन फ्रेंच का जो दोस्त अली का जो सन लॉ था, उसके साथ क्या किया कि चंदा, उसको नाम चंदा साहिब, ठीक है। सन लॉ ऑफ दोस्त अली वाज चंदा साहिब, एंड he had a face to face wrath of the Maratha which compelled him to seek the French war। मराठा का सामना करना पड़ा, तो उससे क्या हुआ कि उससे finally he took the help of French। Mughal Emperor Muhammad Shah, on hearing about the successful French resistance to Maratha, granted finally, हालांकि फ्रेंच का फिर रहा साउथ इंडिया कार्नेटिक वॉर्स हुआ एंड डिफीट ऑफ फ्रेंच। इस तरह समझ किस से फ्रेंच आते हैं, नवाब दोस्त अली वगैरह, चंदा साहिब का अपना इंटरफेयर करता है, मोहम्मद शाह के साथ अपना वो लेता है, उसको देता है भैया आप ठीक है, आप करने दीजिए। कुछ तो इंग्लिश आदमी के साथ, इंग्लिश और के साथ करता है, शाहजहां के साथ करता है इंग्लिश वगैरह। ये ढेर सारे इंग्लिश को बहुत सारे मिलता है, डच को खूब मिलता है भाई, शाहजहां और ये क्या क्या ढेर सारा मिलता है डच का। शुरुआती इस तरह से मुगल और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का रिलेशन जो है हमने देखे। तो हम लोग ये जो लाइव स्ट्रीम है यही हम समाप्त करते हैं। वी विल सी फर्दर ऑन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।